कर लिया। सॉरी यार भाई, गलती हो गई, माफ कर दो। इधर भाई तो तुम बोल दो, कुछ नहीं कर सकते। ये जो आपने एकदम से किया, जिस तरह के नितिन याहू पे ऐसा आजकल लगता है कि कोई मतलब शैतान नाजिल हुआ हुआ है बिल्कुल ही। आपने भी कुछ यार ये यार ये बात तो बहुत सही नाजरीन। बल्कि आज एक काम करते हैं हैदर भाई, जी जी क्या ख्याल मेहदी है? भाई, जी देखिए, मेहदी भाई। सबसे पहले तो नाजरीन को बहुत बहुत सलाम हो हमारी तरफ से। आज के हमारे इस समोसा शो के एपिसोड नंबर 8 में हम आप सबको वेलकम करते हैं। देखिए, ये जैसे इन्होंने बात की है उसके हवाले से, नेतन्याहू के हवाले से। कुछ टाइम पहले से हम लोग डिसाइड कर रहे थे, हैदर भाई क्या ख्याल जी है कि हम नेतन्याहू के बारे में कुछ बात करते हैं। अच्छा, साद भाई आ गए भाई, हमारे कासिम इनकलाबी भाई भी आ गए। जिंदाबाद कासिम इनकलाबी वाह भाई, आ वाह जाए। वाह वाह वाह। अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम वालेकुम। कासिम इनकलाबी भाई, क्या हाल है? अस्सलाम खैरियत से हैं? वालेकुम। ठीक हैं? हेलो बॉयज, हाउ आर यू? कैसा चल रहा है? अल्लाह का शुक्र, मौला का करम है। अल्हम्दुलिल्लाह साद भाई आप सुनाए, अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे हैं? ठीक हैं? खैरियत से हैं? बेहतरीन यार। मैं जरा एक अफ्तार पार्टी पे गया हुआ था। किधर? रूह अफ़ज़ा जामे शीरी, नीचे किचन में, खुद ही अकेले? अकेले अकेले। कोई? पार्टी का नाम दे देता हूँ मैं, लोग आते नहीं हैं। अच्छा अच्छा, तो बिल्कुल आप अकेले थे नीचे अकेला था मैं, डेब्रिटसन ऐसे ही में? है। अच्छा लग अच्छा रहा हूँ अच्छा। लेकिन आज मैं। मेरे बारे में नहीं बता रहा, मैंने आज व्हाइट शर्ट डाली है और साथ में माशाल्लाह, ब्लैक मैंने टी शर्ट बस डाली है। भाई आपकी तो क्या ही बात करे बंदा। ओए आप तो हर भाई, रोज ही हाँ, अच्छे लगते हैं ना। मुझे तो याद अरे आया, स्टेटिंग मैंने अपने होस्ट जिसमें साइड नहीं पे है यार, लगाया। क्या मतलब। देखो, अब देखो भाई कैसा लग स्टेटिंग द रहा। ऑब्वियस मेरा काम नहीं है, ठीक है। स्टेटिंग द ऑब्वियस मैं बिल्कुल नहीं करता होता। ठीक है, चलो चलो चलो, जहां पर लाइमलाइट की जरूरत है वहां पर तू लाइमलाइट दे देता है, क्या ख्याल है? इसके पहले एक डिस्क्लेमर दे दिया करो कि ये ड्रग्स जो हैं ये सेहतमंद नहीं है। गुड। एक मिनट यार, ये चैट को साइड में हम लोग इनेबल कर लेना, ताकि कोई कमेंट शोमेंट अगर हमें आता है तो हम उस कमेंट को भी साथ में देख लें। तो सबसे पहले हम्म। तमाम नाजरीन और हाजरीन को सलाम है। हमारे साथ कासिम इनकलाबी भाई और सूफ़ी जूनियर मौजूद हैं, और मैं आपका होस्ट मिस्टर मैग्नानिमस आपकी खिदमत में हाजिर है। लास्ट टाइम हमारा जब शो ख़त्म हो गया, नाजरीन को एक मिनट का कॉन्टेक्स्ट देता हुआ चलूँ मैं। लास्ट टाइम जब हमारा जी शो ख़त्म हुआ तो हैदर भाई को बहुत नींद आ गई थी, वो तो चले गए। मगर साद भाई और मैं बैठे, थोड़ी देर हमने डिस्कशन की। करने के बाद हमने अपने आप में ये रियलाइज़ किया कि शायद हम ये जो क्या कहते हैं, पैलेस्टाइन का और जो गाज़ा कॉन्फ्लिक्ट राइट नाउ जो चल रही है, इसका जेनोसाइड क्या कॉन्फ्लिक्ट है भाई, गाज़ा जेनोसाइड जो है, इसके ऊपर शायद हम थोड़ा-सा हाथ बड़ा होला रखा हुआ है हमने। एंड वी आर नॉट डूइंग जस्टिस विद दिस टॉपिक। सो हम्म। हमने डिसाइड किया कि चलो हम इस टॉपिक को थोड़ा-सा डिस्कस करते हैं। तो मैं अपने दोनों क्या कहते हैं जो है ना जो कलीग्स हैं, होस्ट हैं मेरे साथ, उनसे गुज़ारिश करता हूँ कि अपनी-अपनी गज़ा के हवाले से एक प्रिलिमिनरी जो है ना कुछ नोट्स पेश करें नाज़रीन की खिदमत में, ताकि हम आगे बढ़ सकें। अच्छा। प्रिलिमिनरी नोट्स। प्रिलिमिनरी कोई इंट्रोडक्शन वगैरह है? कोई एक आपकी तरफ से कुछ पॉइंट्स हैं? जिस चीज़ पे मैं चाहूँगा कि आज थोड़ी बात हो, यार ये नाम मेरा निकल जाता है दिमाग से, लेकिन ये आपने असीदी जूस इस तरह का कोई नाम है वो हाँ, सुना है हज़िड़ी आपने? हज़िड़ी हज़िड़ी हज़िड़ी। हजीड़ी, हाँ। तो उनके हवाले से ज़रा मैं अगर आपके पास इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है कि वो जो हैं काफ़ी अगेंस्ट हो रहे हैं। और ये जो मैंने अभी बात की थी शैतानी वाली नेतन्याहू के हिसाब से, वो भी मुझे यही पता चला था कि ये लोग जो है इल्ज़ाम इस तरह के लगा रहे हैं कि जो नेतन्याहू है उस पे शैतानी जो हैं फ़ोर्सेस का उसके दिमाग पे कब्ज़ा हो चुका है। तो मेहदी भाई, अगर आपको इस बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है तो वो मैं जानना चाहूँगा कि मतलब आपको क्या पता है इस बारे में? क्योंकि मेरे लिए काफ़ी इंट्रिगिंग बात थी। यार ये इसमें तो टाइटल ही रखते हैं ना आज हम, क्या ख्याल है कि नेतन्याहू हैज़ बीन टेकन ओवर बाय डार्क सैटेनिक फोर्सेस। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये इसका हम बल्कि टाइटल ही यही रखते हैं, क्योंकि ये चीज़ें न सिर्फ ये बार-बार ये चीज़ें इनकी क्या कहते हैं, जूस के काफ़ी फैक्शंस हैं। अगर हमारे नाज़रीन के दिमाग में बेशक। ये है कि जो सारे के सारे जूस इज़राइल को सपोर्ट करते हैं, इज़राइल के साथ हैं, तो ऐसा नहीं है। बल्कि ये जो ऑर्थोडॉक्स जूस हैं, अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स जो जूस हैं वो हो गए, और उसके साथ में हसीडीज़ हो गए, ये इंतहाई खिलाफ हैं। इंतहाई और हद तक कि इस तरह ये सबसे जो पुराने हैं वो हंगरी में 1-2 बड़े-बड़े जूस जो रेबाइस हैं, उन्होंने कहा सैटेनिक स्टेट क्या हो भाई इसको, इसराइल को। हर और दफ़ा जिस न्यूयॉर्क में, तरह पेरिस में। पहले भी हमने एक बात की थी कि ये जो हमला हुआ था, जो हमास हुँ, की तरफ से अटैक इनिशिएट किया गया था 17th को, हुँ। उसके 2 दिन बाद ही एक प्रोटेस्ट प्लान्ड थी विद इन इसराइल बाय द ज्यूज ऑफ इसराइल अगेंस्ट नेतन्याहू। तो इस हाँ, बात और को इसके ऊपर लेके चार्जेस आप भी हैं, पता है? ही इज़ राइट बेशक, नाउ ही इज़ गोइंग थ्रू क्रिमिनल चार्जेस इन क्रिमिनल बेशक। कोर्ट। वो अपने उसके दौरान है ये, क्या कहते हैं, अपनी जो चार्जेस की जो प्रोसीडिंग्स है ना, वो हो हुँ, रही हुँ। हैं राइट नाउ उसके ऊपर, उस शख्स और के ऊपर। सुनने में ये भी था कि ये जिस तरह बेसिक जो इनकी ट्राइब्स हैं जो उसके अंदर ज्यूज़ के अंदर, अब मैं मुझे मतलब बातों का इतना क्लियरली नहीं पता, तो मैं उम्मीद ये कर रहा हूँ कि मेहदी भाई को थोड़ा ज़्यादा क्लियरली पता होगा, लेकिन नहीं, मैं नहीं, जो हम बैकअप फ्रैगमेंट्स हैं करेंगे। उनको प्लेस कर रहा हूँ।
तो एक ये भी है कि इनके अंदर जो बेसिकली कास्ट सिस्टम है वो थोड़ा हिंदुइज्म को भी रिफ्लेक्ट करते हैं कि कुछ कास्ट हैं जिनको रिस्पेक्ट ज़्यादा दी जाएगी, कुछ कुछ को कम दी जाएगी। तो जहाँ तक मुझे पता है जो प्रोटेस्ट प्लान थी वो समथिंग लाइक दिस थी कि उसने कुछ उसमें से उनको ऑफेंड किया, और एंड ही वाज टॉकिंग अबाउट द रियल जूस, और वो इस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहा था या समथिंग। वही तो वही इन वही इन इनका इन एक टॉपिक्स पे मेरे ख्याल से बात होनी चाहिए जो ज़्यादा हो नहीं रही। मतलब गज़ा की ऑन फील्ड क्या सिचुएशन है, इट्स ऑब्वियसली द वर्स्ट सिचुएशन दैट कैन बी in today's world. It is a situation of war and death every day. तो वो तो एक ऑब्वियस बात है कि वहाँ पर जितनी डिस्ट्रक्शन हो रही है, इट्स देयर इज नो एक्सप्लेनेशन फॉर दैट। कासिम इनके अलावा भाई, वी आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर योर इनसाइट्स ऑन दिस। यार इस पे तो डिफरेंट इसके सर्कल्स है ना जिसके ऊपर बात की जा सकती है। तो पहले तो सिंपल क्लियर एंड कट जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है कि ये जो एक कॉमन करंट अफेयर्स पे अगर बात की जाए, लेट्स ट्रीट इट, अगर इसको देखा जाए एक पॉलिटिकल नजरिए से, टू कीप द, क्योंकि एक मसला बहुत बड़ा इसमें ये है ना कि when we talk about it, obviously we have to talk about it with a religious point of view perspective, or a hint of religion in it as well. It's not only political, not just for us. In fact, for the Jews, the people of Israel, it is basically. But when you talk about it religiously, it is called a political issue, and that you should not bring religion into politics kind of bullshit. But the problem is that to begin with, the whole existence of Israel is based on religion, so you बेशक। ट्रू, cannot separate the ट्रू, two. So ट्रू। to understand the depth of this issue, first of all, yes, of course we can, we cannot separate religion and politics from this. Lekin, to first of all understand the issue, everyone should talk about it in a humanitarian way. I really don't care हम्म। if the people of Palestine are Muslims, Christians, Jews, Hindus, yellow, pink, brown, black, green, white, whatever color, whatever race, creed, caste, culture, does not really matter in the current issue that is going on, which according एग्जैक्टली, to everyone in the Western world seems like it started after 7th of October, and there was utmost एग्जैक्टली। peace and a universal sort of peace existing in the land, but it was not. So if you look at it from that perspective, it's just absurd. I don't know how much can anyone can just say it. It sounds stupid to, I don't know, beg people to believe that this is actually not right. I mean, I'm not even talking about someone should come and accept that, oh, it's a genocide or not. No, it's just fucking call it wrong. You don't have to say anything, just at least say like, okay, okay, Israel has a right to defend, Israel has a right to this, Israel has a right, whatever mindset you have, whatever, does not matter. First, you, everyone, I mean, I'm talking about the Western people who are trying to justify the situation with multiple theories. They should at least, before they start to say anything else, they should at least first of all condemn the loss of humans that is going on. You know, everyone should acknowledge first of all that this is wrong and this is not, this should never be accepted. And then we can move on to the other debates, which in no way Israel, a supporter of Israel, can justify. There is no debate. And there are multiple reasons for that, we can talk about that. एक नहीं, हाँ, तुम्हारी बात खत्म हो गई है। Hmm. यार एक जो मैं मुझे लगता है कि हमें जहाँ से बात शुरू करनी चाहिए वो हमें यहाँ से करनी चाहिए कि डज पावर इज रिलेटिव टू द अमाउंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी यू हैव। कि Hmm. अगर दो साइड्स हैं और एक एक के पास पावर ज़्यादा है और एक के पास पावर कम है, तो ओवरऑल इन दोनों के बीच में अगर किसी भी तरह की कुछ भी एक्शंस इनके बीच हो रहे हैं, तो उसकी जो भी डिस्ट्रक्शन है या पॉजिटिव है, डज इट इज इट मोर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द वन विद पावर, और डज द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉल इक्वली ऑन बोथ साइड्स? That's a really good thing to start with, and it's very simple. Obviously, the one with more power is the responsible one, of course. Of course, it's very simple, but but then it is not the preposition of people in general. So why is that if it's so simple that people don't naturally just
think of it this way, that Israel is much, much more powerful. So they bear the huge chunk of the responsibility relating to the death and destruction in the area. See, in this matter, I only think in one small way, that it is that because see, it's not people on the eastern part of the world, or most popularly Muslim part of the world, obviously believes that this is wrong and whatever Israel is doing is wrong. So majority of people who are claiming, let's just go region by region. First of all, let's talk about India. Indians are biggest non-white, non-Jew, non-Christian population right now Supporters of on earth, Israel. who are deliberately, blindly supporting Israel. And now let's just look into what are the reasons of a common Indian who would just go to India and he would see a video of a baby malnutrition, dying from starvation, and this common Indian layman who's probably a student or a normal 30 years old working guy, and he would go there, and he's educated in India, and he goes there and he's like, okay, I saw a baby dying, and now no one talked to me, no one asked for my opinion of, or India is nowhere related in any matter, it's not related to the issue that is going on. But as an Indian, he comes and he's like, okay, I have to, it's my responsibility to write that, oh, I stand with Israel. But now the idea is, why is an Indian guy believing that it is his responsibility to come here and tell us that he is standing with Israel, that he is praying for Israel? What is the purpose behind that? What do you think? What are they trying to do? What is their I idea? mean, for me, and this might sound like I'm using the basest of my brains to come up with the conclusion. I think it's just the natural hate that exists towards Islam in India that Yes, motivates Islamophobic. them The for Islamophobic this. logic towards it. That's the only thing. I mean, I do realize that this sounds like the basest of conclusions, but I mean, for me, it's very clear that is the hugest factor in this. But but why? There are like more than, I don't know, 23 million Muslims living in India right now, around 30 million. Hmm. What is this like? Still, like, how is this? What is the? I mean, I understand that, of course. No, Uh, it is sheer ignorance. Sheer ignorance. If you're thinking that it is something else other than ignorance, it is not. It is sheer Mehdi bhai, ignorance of those people. I Hyder think bhai, let me complete yes, one yeah, sentence. yeah. For example, when you look at this, even not only it's not only about other states. It's not only about other states. It's also about Israel itself. They have a logic. They have a different logic as compared to the other parts of the world. One is Israeli logic, and the other logic is the rest of the world logic, where they try to imply that whatever they are saying is right and the others are wrong. The question here is कि pre 7 October they think there was nothing, there was no conflict, and वो आराम से रह रहे थे, अपनी पार्टियां कर रहे थे, and some mob, some terrorist group came and attacked them. The problem is यहाँ पर सारा प्रॉब्लम लाई करता है, and they are marketing this part. 7 October, 7 October, we were attacked, 7 October, 7 October. I mean, let's go beyond 7 October. वो आज I was looking at, मैं एक वो शो देख रहा था मेहदी हसन का और पीर्स मॉर्गन का. तो वहां पर Mm. वो पीर्स मॉर्गन बार बार जब उसको 7 अक्टूबर सामने से कहता है, तो मेहदी हसन कहता है कि अ, क्या आप एक डेट और चंद घंटों में थोड़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो गई, उसको आप डिफाइन करते हैं एज एक्ट ऑफ टेररिज्म, या यू क्या कहते हैं, डिफाइंड एक्ट ऑफ टेररिज्म एज कोई ऑक्यूपाई करता है, कोई किसी बच्चे को मारता है, उनके घर से निकालता है, इसको भी आप डिफाइन करते हैं. तो देन ही सेड, फॉर मी, मेरी डेफिनेशन के मुताबिक इसराइल की जो फोर्सेस हैं, इसराइल इटसेल्फ इट्स अ टेररिस्ट कंट्री, इट्स अ टेररिस्ट स्टेट राइट नाउ. द सेम वे अगर आप ये कहते हो कि वो टेररिस्ट है, मैं मानने के लिए तैयार हूँ, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम. ठीक है, हमास इज टेररिस्ट फॉर अ वाइल. ठीक है, बट फॉर मी एक स्टेट का टेररिस्ट होना उनको डूब मरने का मकाम है उनके लिए, पहली बात. दूसरी बेशक. बात, इनकी जो लॉजिक है कि 7 अक्टूबर से पहले सब कुछ भूल जाओ, क्यों बोले हम? प्रॉब्लम शुरू हुई 1948 से हुआ है भाई, अभी तक. नंबर दो. और नंबर थ्री, अभी ये लोग दुनिया को ये बता रहे हैं कि भाई ये हमारा डिफेंस है. वो कहते हैं कि दिस इज एन एक्ट ऑफ डिफेंस. भाईजान, एक्ट ऑफ डिफेंस क्या? हाउ आर यू डिफाइनिंग एक्ट ऑफ डिफेंस? यू आर किलिंग 30,000 पीपल, जिसमें से 12 से 15 हजार किड्स, बच्चे और Okay, वीमेन. see, the thing about this is like, okay, an Israeli government official comes on the media and says like, oh, we are defending ourselves. Does not really matter. But the problem I have is with
common people of parts of the world, like someone living in America, you would see their comments on the I social think media, and you would see their debates, and that's all they say. Like I you think ask it's anyone, I the think person it's will be, yeah, that important is fair. to I think it's important to go back to India and try to rationalize why Okay, so a I will common I will Indian. get to India. So एक मिनट initially, एक मिनट if एक you मिनट, ये इंडिया के हवाले से मैं एक बात करूं, थोड़ा सा, एक छोटी सी जी बात. मेहदी भाई. Hmm. The problem is when Pakistan was going to do its nuclear test क्या कहते हैं 1998. So the problem was in May 1998. So the problem is Pakistan, not only just Pakistan, any powerful Muslim country which has a strong Islamic ideological backgrounds, or the people could be like more inclined more towards any Islamic ideologies, is they are these countries, are any country which falls under this category, is a direct threat to Israel. So what happened was when Pakistan was doing nuclear test, India was trying its best to foil those. So in the meantime, what happened was Israel was also kind of shaking hands with India that in any way, agar future mein, they were not predicting that Pakistan was going to come out as such a mess right now. So what they were doing was, also Pakistan, somehow it was like a bit stronger. So what they did was they kind of shook hands with India and said, okay, bhai, hum aapke saath hain. And they kind of tried their best. If you know it, so Israeli planes, they went to India, they were there, and they were planning to attack. So in that time, Pakistan contacted China and some other क्या कहते हैं, even they delivered this to America कि भाई Israel is trying to क्या कहते हैं यार हमारे इस problem में वो problem खड़ी करना चाह रहा है, and we are giving a threat, direct threat कि भाई अगर something happens then it will be an all out war. फिर पाकिस्तान ने थोड़ा सा अपना डिफेंस, और पाकिस्तान की डिफेंस, एयरफोर्स डिफेंस इज बेटर देन लाइक many countries in the world, like it's super powers के करीब, it's very good. So they Probably the kind of whole वो world नहीं आ सके expert, अंदर. yeah. So in the meantime, this hatred towards Muslims and Pakistan is not only side, not only from India, it's also equally from Israeli side. So that hate kind of binds them together and makes friends. भाई दुश्मन का दुश्मन दोस्त वाली कहानी भाई, समझ रहे हो? सो इंडिया काइंड ऑफ अगर स्टेट वाइज देखा जाए तो पाकिस्तान का दुश्मन है, सो इसराइल और इंडिया आपस में अच्छा, दोस्त होंगे. दैट इज इसमें द कॉमन लॉजिक. देखो, इसमें जब इंडिया आज़ाद हुआ ना 48 में, वही टाइम में जब इसराइल भी स्टेट बना, 47 में इंडिया स्टेट बना, इसराइल 48 में स्टेट बना. इनिशियली, क्योंकि ये जो लॉबिंग है फॉर द इसराइली स्टेट, इट हैड बीन गोइंग ऑन सिंस बिफोर 1947, अ लॉन्ग टाइम अगो इट हैड ऑलरेडी स्टार्टेड. एंड ये एक एक लॉबिंग चल रही थी जो कि नई दुनिया में पावर्स क्रिएट होंगी, खासतौर पे इंडिया एक बहुत बड़ी इकोनॉमिकली भी और पॉपुलेशन वाइज भी, और एक नॉन मुस्लिम मेजोरिटी वाइज भी एक बहुत बड़ी एक पावर थी जिसके ऊपर एवरीवन हैड देयर आइज ऑन. तो खास तौर पे जब पहले इंडिया जब इसराइल बना है ना, जब ये आए हैं, इन्होंने डिक्लेयर किया इंडिपेंडेंस इसराइल ने, तो इन्होंने अप्रोच किया है इंडिया को. और इंडिया का इनिशियल स्टैंस, बेशक गांधी वाज ऑफ द आइडिया, ही यूज्ड टू से कि इसराइलीज जो ज्यूज हैं, यहूदी जो हैं, ज्यूज हैव अ राइट टू स्टे इन द लैंड ऑफ प्रेजेंट डे इसराइल व्हिच इज पैलेस्टाइन. गांधी वाज ऑफ द माइंडसेट कि उनका हक तो है रहने में, लेकिन a state should never be made on these lines, on religious grounds. For Jews it should never be made. वहां पर living Arab population does not mean only Muslim population. Arab population mean Arab Christians, Arab Muslims, and Arab Jews residing in the state of Palestine before the creation of Israel have the first right to rule that land and live on that land. And the people, Jews, who are coming from abroad, who are being exported from Europe to Palestine, should not be sent to Israel. They should be sent back to their respective countries of origin. ये बेसिकली गांधी जो है इंडिया का फाउंडर, उसकी बेसिक ओरिजिनल आइडियोलॉजी यही थी. ही वाज अगेंस्ट द settlement of people. He was not against the creation of Israel. He was against the settlement of non Israeli or non-Palestinian Jews in these lands. He was against that ideology. Even more so, ये एल्बर्ट आइंस्टाइन जो इसका जवाहरलाल पंडित नेहरू का एक ये बड़ा करीबी दोस्त भी हुआ करता था. दोस्त तो नहीं इतना मतलब होता था, लेकिन दे हैड टाइज, दे वर इन टॉकिंग टर्म्स. एल्बर्ट आइंस्टाइन जो है, वो नेहरू को उसने बाकायदा लेटर लिखा कि यार इंडिया जो है, इंडिया शुड एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ इसराइल और इसको मदद करनी चाहिए इसकी सेटलमेंट में जो ज्यूज आ रहे हैं.
और उस टाइम पर अराउंड 1948 49 50s ये उसने भी, ये एल्बर्ट आइंस्टाइन जो साइंटिस्ट है, देख रहे हो, ये मतलब ये बंदा इधर अप्रोच कर रहा था पॉलिटिकल लेवल पर, और उसने उसको नेहरू ने। साद भाई यहाँ पर मैं आई एम वेरी सॉरी टू स्टॉप यू, आप कंटिन्यू करें इस बात को बाद में, हम्म, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बट आई वुड लाइक टू से समथिंग। जैसे व्हेन आई स्टार्टेड दिस थिंग, मेरा वो कुछ दिन पहले भी जब हमने प्रोग्राम करा, शायद इट वाज आवर फर्स्ट प्रोग्राम इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सूफी जूनियर, व्हेन वी स्टार्टेड टू टॉक अबाउट दिस पर्सनैलिटी, दिस पर्सन नेतन्याहू, व्हाई आई वांट टू डिस्कस दिस पर्सन। ये देखो लॉजिक, मैं तो उस दिन मैं यू रिमेंबर मैं कह रहा था कि टर्म्स को वापस लाना चाहिए, टर्म्स लगाने चाहिए हमें, ठीक है। हमें आज के बाद डिफाइन करना चाहिए कि जो बंदा ये कहता है कि इसराइल सही कर रहा है इस वक्त ना, उसको एक टर्म बताओ भाई। इंसेंसिटिव प्रिक कहो उसको, इन्फिड क्या, कोई टर्म क्या हो सकती है इंग्लिश में, कोई क्या कहते हैं यार, कोई अच्छी सी टर्म बताओ। वी नीड टू, इनको टर्म लगाना जरूरी है इन लोगों को। सो हुएवर supports the state of Israel right now, or whoever supports the act of terrorism being done by state of Israel right now is what? एक टर्म बताओ जल्दी से। एंटी ह्यूमैनिटेरियन। टेररिस्ट कहो। इट्स नॉट सो डेवस्टिंग, टेररिस्ट करो। They are लेकिन the terrorist. terrorist is a term that can never be associated with them. It's associated with us so strongly. और आप चाहते So हो we कि need ऐसी to change टर्म it हो ना जो कि they are the terrorist, they are the that terrorist now, cannot, we we have have to to come up with term some उनके other ऊपर term. some new That term, will some never new term। तो happen. ये No, एक no, ये no. दूसरा दूसरा मैं Israel, first of all, is I would like to add on to this. Israel is a rogue nation. Israel is a rogue yes, nation. It is an yes, actual a Rogue, rogue rogue nation। nation. rogue against who? Rogue against everyone in the world. They, even though Yes, they are in bed with the Western world right now, the Christians and the Americans and whatever, but it is not a safe place for anyone. This, the existence of the country, it is just as rogue. No one can trust them entirely. Even America would never do that mistake of trusting these people entirely. It is a rogue nation. They Hmm. are there to cause chaos, and they will always be causing chaos for one or the other. There is no sense to this existence. इसमें जो बात है Israel ना is कि a rogue nation, I'm pinning this comment। अब Okay. इसमें बात सारी ये है ना, क्यों, why is it a rogue nation? What is a rogue nation? I'm not saying it because I hate Israel just like that. I'm saying it according to the international terminologies set according to the United Nations and the ICJ. This is what a textbook definition of a rogue nation is, which does not abide by the international laws, which deliberately goes against the laws, ignores the laws. Which laws? Environmental laws, humanitarian laws, the treaties signed internationally, and the which fall under the articles of UN. It is a signatory to those things, and it does not even sign a lot of treaties. This is a textbook definition of, if you would look up the definition of rogue nation, and what, this is exactly what a rogue nation is, which does not intentionally adheres to the international law, which intentionally, a state which does not abide the international law. Share your screen. Share your screen so we can read the description too. क्या Who? स्क्रीन? साथ तू कहीं से पढ़ रहा है कि तू ये खुद नहीं से नहीं, मैं बोल? तो खुद बोल रहा हूँ ना, मतलब, अच्छा बट दिस तो इज द डेफिनेशन। सही। सुनो ये ना, Let's pull up सुनो सुनो the सुनो सुनो, एक Israel is a rogue nation. It is a terrorist nation, right? Nation, not like it's a state. It is what it is doing right now is terrorism, and all those people who are sympathizing with them right now, they are also inclined towards being rogue and being terrorist. So the next thing I was telling you about is why I was discussing this person, this मिस्टर नेतन्याहू। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, उसकी लाइफ में उसने क्या किया है, व्हाट वाज हिज आइडियोलॉजी, उसके दोस्त कौन है, वेयर ही हैज़ बीन वर्किंग, यूनाइटेड स्टेट्स में उसने कहाँ पढ़ा, क्या किया क्या नहीं किया। द थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज उसकी मैंने कुछ पुरानी वीडियोज़ देखी जिसके अंदर ही सेइंग, जब उससे पूछा जाता है कि डज पैलेस्टीनियंस हैव अ राइट टू हैव अ स्टेट, क्या कहता है पता है सामने से वो? हम्म फर्स्ट ऑफ ऑल तो नो, लाइक क्लियरली कहता है दे हैव नो राइट टू हैव अ स्टेट। ठीक है, इसकी पुरानी वीडियो है। when his name was बिन निते, नॉट बिन, इसने अपना नाम 3 दफा चेंज किया है। फर्स्ट उसका नाम कुछ और था, अपने दादा के नाम पे था, देन ही चेंज टू बिन निते एंड देन ही चेंज टू बेंजामिन नेतन्याहू। दिस पर्सन, ये बंदा, ही इज वेरी कनिंग इन हिज नेचर, ही इज अ कावर्ड, ठीक है, एंड ही इज गुड इन टॉकिंग। एंड इसकी पता है क्या है इसकी, ही हैज बीन समहाउ, जैसे हमारे यहाँ बाज एक पागल किस्म के मौलवी बाज औक़ात मिलते हैं ना, जो कि कहते हैं कि अभी वो एक मौलवी चल रहा है आजकल, वो कह रहा है 78 साल में या 80 साल में क़यामत आने वाली है मेरी कैलकुलेशन के मुताबिक, अगले 80 साल में। ठीक है, तो इस तरह के मौलवी, तो इस तरह के किसी इनके एक जूइश रेबाई ने, जो कबालिस्ट होता है, कबालिस्ट कहते हैं उनको, जो एक इनका एक कबाला एक इल्म है इनका,
नंबर्स का एंड ज्योमेट्रिक सिस्टम का एक इल्म है इनका, बड़ा जादू वाला टाइप का सीन है। तो उसने इसको बताया है कि यू आर द वन जिसकी जिसकी लीडरशिप में वी विल मीट, क्या कहते हैं, मुशय्यख, जो इनका मसाया है, इनका मसीहा जो है, वी विल मीट हिम। सो ये बंदा नॉट ओनली, ही इज नॉट ओनली ड्रिवन बाय हिज इकोनॉमिक और हिज पॉलिटिकल मोटिव्स एंड क्या कहते हैं आइडियल्स, बल्कि ही इज क्या कहते हैं, एक एक्सट्रीमिस्ट रिलीजियस थॉट के पीछे चल रहा है कि एक मसीहा आने वाला है और उसकी मैं मदद कर रहा हूँ और उसको आई विल बी गिविंग अ गुड नेशन जो कि विल बी फाइटिंग विद दीज पीपल। दैट्स व्हाट ही बिलीव्स इन। वो कहता है कि फलस्तीनियन नेशन अगर दुनिया में कोई है तो वो जॉर्डन है। दैट्स व्हाट ही इज सेइंग। वी नीड टू एक्सपोज दिस पर्सन। इसराइल जो कर रहा है वो तो गलत है, वो तो इतना गलत है कि कोई बंदा इसको डिस्कस करे तो वो बहुत, मतलब अगर कोई बंदा मेरे सामने आके ये डिस्कस कर रहा है ना राइट नाउ कि जो इसराइल कर रहा है वो गलत है या सही है, तो मैं उसको कहूंगा भाई यहाँ से निकलो, लाइक आउट, तुम इंसान ही नहीं हो। ये सवाल रेज, हु द हेल इज लाइक रेजिंग दिस क्वेश्चन, व्हाट इजराइल इज डूइंग इज राइट और रॉन्ग। द थिंग इज ये पर्सन कौन है, व्हाट ही इज थिंकिंग, भाई क्या कर रहा है। प्रॉब्लम क्या है, मैं क्यों इस बंदे के ऊपर एक और रीजन क्यों फोकस कर रहा हूँ, वो ये है कि अगर आपको ये लग रहा है ना साथ भाई कि इसकी जो वॉर वॉर कैबिनेट है, इसके जो डिफेंस मिनिस्टर्स हैं, इसके जो कनेसेट के जो क्या कहते हैं मेंबरान हैं, अगर आपको ये लगता है कि ये इसको सपोर्ट कर रहे हैं, दे आर नॉट सपोर्टिंग हिम। बहुत कम लोग इसको सपोर्ट कर रहे हैं। ये एक रिलीजियस अपार्थाइड रिलीजियस और ये सख्त एक्सट्रीमिस्ट रिलीजियस एक आइडियोलॉजी के साथ खड़ा है, जिसमें से ये जो जायनिस्ट है ना, जायनिस्ट जायनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के जो लोग हैं उनके अलावा इसको कोई भी सपोर्ट नहीं कर रहा है राइट नाउ। बाइडेन being part of the same Zionist lobby is supporting him। जितने जायनिस्ट लॉबी के लोग हैं सब इनको सपोर्ट कर रहे हैं राइट नाउ। क्यों? क्योंकि ये जायनिस्ट आइडियोलॉजी के पीछे लग रहे हैं, ये खुद इसराइल के लिए सही नहीं है जो काम कर रहे हैं राइट नाउ। सो दैट्स व्हाई दिस टू डिस्कस दिस पर्सन इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि भाई इस बंदे का क्या चक्कर है, ये कौन है, ये क्या कर रहा है, ये हरकतें क्या हैं इसकी, समझ रहे हो ना। दैट्स व्हाई मैं बंदे के ऊपर ज्यादा जोर लगा रहा हूँ। आपका क्या ख्याल है साथ भाई? अच्छा आप कंटिन्यू तो करें, पहले वो इंडिया वाली बात कर रहे थे आप, अल्बर्ट आइंस्टाइन की जो पॉलिटिकल मोटिव्स थे, आप साइंटिस्ट हो, आपने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और वो स्पेस की चीजें की, और आप यहाँ पर आकर कह रहे हो इसराइल को सपोर्ट करो। एल्बर्ट हु द हेल आइंस्टाइन आर यू? जर्मन था, जर्मन Yeah, था oh, ना? yes, he was a जर्मन था ना? German Jew of Jewish. अच्छा, अच्छा इसमें अच्छा। अब मूविंग ऑन, वो जो बात अब उस पे आ गई ना, डेफिनेशन ऑफ इसराइल, व्हाई इज इट अ रोग नेशन, ये आई एम नॉट मेकिंग दिस अप, दिस इज टिपिकल। बेसिकली ये अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल लॉ व्हिच इज अ थ्रेट टू द वर्ल्ड पीस, अ कंट्री दैट इज अ थ्रेट टू द वर्ल्ड पीस इज अ रोग नेशन। ठीक है, एनीवन सी दिस, आई एम सेइंग these terminologies because the people in the west, they don't like to talk to you or us in the terminologies that we use, you know. So यस this is but anyone who is whatever mindset, for example an unbiased person who is I don't know, for whatever reason, or because they have fallen into the propaganda, they are supporting Israel. Let's say Americans or India, keep that aside, India has other ambitions as of now. ये रोग नेशन है, ठीक है, पहली बात तो ये। अब इसके बाद जो ये सारी बात है कि बेंजामिन नेतन्याहू जो बंदा है बाय हिमसेल्फ, इसके क्या किरदार है बंदे का, ये इसकी, जैसे तुम कह रहे हो, ये इसकी तीसरी टर्म है ना, अब ये तीसरी यस बार वजीर आजम बना है यस इसराइल का। यस यस तो जब इसका शुरू होता है, इसमें पहले ये आता है, जब ये पहली बार आया है उस टाइम पर आखिर इसने काफी बातें वो वाली की हैं आके पावर में आके, कि जी ये टू स्टेट सोल्यूशन, और काफी अथॉरिटी इसने दी, फलस्तीन के जो अथॉरिटी है वापस की है, बल्कि काफी जो कंट्रोल है, एडमिनिस्ट्रेशन जो है काफी रीजन्स के फलस्तीन के, वो इसने वापस पैलेस्टीनियन अथॉरिटीज को अपने टाइम पे नेतन्याहू ने पहली टर्म में अपने वो किए, वापस किए, एक्टिंग ऑब्वियसली अगेंस्ट पैलेस्टाइन एट द टाइम। इसने वो उधर इसके टाइम पे फिर इन्होंने कत्ल शत्ल किया जॉर्डन में घुस के, कुछ इनके लीडर्स का, जो फलस्तीन के पीएलओ वगैरह के लीडर्स थे, उधर जॉर्डन वगैरह में घुस के इनके जॉर्डन से ताल्लुकात खराब हो गए उस टाइम पे। खैर ये उस टाइम पर आई डोंट नो कौन अमेरिका का वो था, उन्होंने मीडिएट करके ये वो किया। उसके बाद ये अगला इलेक्शन असल में हार गया ये उसके बाद इसको, क्योंकि अगेंस्ट इसके बड़ी सख्त ऑपोजिशन इसराइल में यहूदियों की हो गई कि ये बंदा जो है ये फलस्तीनियों को जो है हक शक दे रहा है, ये कैंसिल है। तो इसके उस टाइम पर, उसके बाद से इसकी अलग ही एक वो चलनी शुरू हुई, एक ज्यादा ये एक्सट्रीम पे चला गया। अब जो प्रेजेंट डे बात चल रही है फलस्तीन में कि ये इशू है क्या, तो हमेशा से एक ये वो बात है ना कि यार एक तो समझ नहीं आती ना, ये इसमें बात इतनी बड़ी है कि है, तो इसको वही ब्रेक डाउन करते हैं। पहले आ जाते हैं रीजन्स पे जो कि इजी टू डील विद हैं, जो कि शॉर्टर इस पे बात होगी जिन टॉपिक्स पे। तो पहले वो है कि जो इसराइल और फलस्तीन के बाहर के जो इलाके हैं और वहां पे जो लोग हैं वो इनको सपोर्ट क्यों कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अब इंडिया है, इंडिया का जैसा एक बड़ा रीजन है कि हेट जो है, मुस्लिम हेट जो है, वो सबसे बड़ा रीजन है इंडिया का, कि ना सिर्फ
इंडिया के लिए क्यों जरूरी है इस टाइम इसराइल को सपोर्ट करना? क्योंकि इंडिया इज एक्चुअली डूइंग एग्जैक्टली द सेम इन इंडिया व्हाट इसराइल इज डूइंग इन इट्स फलस्तीन, इंडिया इज डूइंग द सेम इन इंडिया। सही है। तो इंडिया को बहुत जरूरी है टू लेजिटिमाइज इट्स ओन एक्शंस। ठीक है, इट्स ओन एक्शंस, इसकी अपनी रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट, क्योंकि देखो हम एक 21st सेंचुरी में पहुंच गए हैं जहां पर एक वर्ल्ड की जो सिस्टम है वो इस तरह का बन चुका है ऑलरेडी दुनिया का, जो कि वो ये सिस्टम है दुनिया का ऑलरेडी के ये आउटडेटेड बातें हो गई थी असल में, कि रिलीजियस बेसिस पे, रिलीजियस ग्राउंड्स पर दुनिया में कवानीन किसी मुल्क में बनाए जा रहे हैं, खास तौर पे वो स्टेट्स जो कि अपने आप को सेक्युलर आइडेंटिफाई करती हैं, जैसे इंडिया आज तक सबके सर पे चढ़ के नाचता है कि हम जी सेक्युलर डेमोक्रेटिक स्टेट हैं। तो इस तरह की स्टेट्स के लिए बहुत मुश्किल हो गया कि ये रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म को अपने मुफाद में कैसे इस्तेमाल किया जाए। तो ये उसको लेजिटिमाइज करने का एक सबसे अच्छा टूल है कि भाई जो उसके बाद इसराइल जो है ना हमेशा से लॉबिंग करता रहा है इंडिया के लिए, वो इस तरह करता रहा है साथ में कि हर इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट में इसराइल ने इंडिया की बेजा सपोर्ट की है, इंडिया को असला दिया है, इंडिया को पैसा दिया है, इसराइल ने डिफेंस सिस्टम्स दिए हैं जो कि ऑब्वियसली अमेरिका से उनके पास भी आते थे और वो आगे इनको अमेरिका वो इंडिया को पहुंचाते रहे अभी तक। इनके खास तौर पे इंडिया के न्यूक्लियर प्रोग्राम में इसराइल ने इनको बहुत मदद की जो इंडिया ने जिस टाइम पे बनाया, जबकि उस टाइम पर भी टोटली रिकॉग्नाइज नहीं करता था इंडिया इसराइल को एज इन मतलब स्टेट तो मानता था, लेकिन तल अवीव के अंदर इंडिया की कोई एम्बेसी मौजूद नहीं थी। लेकिन कोशिश इसराइल की तरफ से जारी रही है उस टाइम पर सारे सिलसिले में। उसके बाद एक बड़ा रीजन ये है कि इंडिया को एक ऊपर से सबसे बड़ी बात ये है कि टू कॉन्स्टेंटली डिमोनाइज के एक रियलिटी इस प्रोपेगेंडे को बढ़ाया जा सके और रियलिटी एक वो देते दी जा सके कि मुस्लिम्स कैन नेवर बी ट्रस्टेड इन अ कंट्री, क्योंकि इंडिया एक ऐसी स्टेट है जहां पर एक बहुत बड़ी एक माइनॉरिटी ग्रुप है, बट इट इज अ वेरी बिग माइनॉरिटी ग्रुप। इट इज वन ऑफ द सबसे ज्यादा पॉपुलेशन ऑफ मुस्लिम्स दुनिया में, टॉप 5 कंट्रीज में एग्जैक्टली, आता है इंडिया मुस्लिम एग्जैक्टली, पॉपुलेशन इट्स इन में। इंडिया। तो इंडिया के जो एक्शंस हैं, जो इंडिया की बातें होती हैं, इवन दो इतने मुसलमान उधर रहते हैं, उसके बाद इंडिया कीप्स ऑन कॉन्स्टेंटली सेइंग कि भाई मुस्लिम्स खतरनाक एलिमेंट है सोसाइटी के, इंटीग्रेट नहीं हो सकते, ये नहीं हो सकते, टेररिस्ट कैपेबिलिटीज हैं, ये हैं वो हैं, जिहादी माइंडसेट है, शरिया लॉ लाना चाहते हैं, ये करना चाहते हैं, सबको मारना चाहते हैं, काफिरों को खत्म करना चाहते हैं। तो इंडिया एक बहुत बड़ा वो है असल में शो है, मतलब इंडिया बाय इटसेल्फ, आई ऑलवेज से दिस इज व्हाई इंडिया इज अ सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स, ऑलवेज इंडिया हैज बीन अ, क्योंकि देखो मैं एक इंडियन सब कॉन्टिनेंट से बिलोंग करता हूँ। मैं मेरे लिए एक फैंटेसी, एक बड़ा एक आइडियलिस्ट वर्ल्ड व्यू में ये होता कि यार काश इंडिया और पाकिस्तान बड़ी एक एलाइज होते और ये रीजन सब कॉन्टिनेंट का एक थ्राइविंग रीजन होता। हम एक ही लोग हैं, एक जबान बोलते हैं, एक कल्चर है, एक ही ओरिजिन है हमारे, बड़ी तरक्की करते, दुनिया के लीडर होते हम लोग। लेकिन व्हाट इज द हिंड्रेंस इन दैट इज नॉट हिंदू हेट इन मुस्लिम्स। मुस्लिम्स नेवर हेटेड हिंदूज। बहुत सदियों मुसलमानों ने रूल किया हिंदुओं के ऊपर और हिंदू खुशी से रहे, तरक्की की इंडिया ने उस टाइम पर, हिंदुओं ने मुसलमान रूल के अंडर, दे वर गिवन बिग पोस्ट्स इन इन द गवर्नमेंट्स, दे वर गिवन बिग लैंड्स टू रूल बाय देमसेल्व्स। उनकी जो अपनी रीति रिवाज थे वो बरकरार रहे, कभी खत्म नहीं हुए। देखो अगर 400 साल अगर आपके ऊपर कोई काबिज रहता है ना, तो वो हिस्ट्री मिटा देता है आपकी। जैसे आपने यूरोप में देखा, आज आप जाओ बेशक। अंदलूस में, आपको पता नहीं चलता, इधर जाओ हंगरी शंगरी जाओ, ईस्ट यूरोप जाओ, पता नहीं चलता इधर कभी मुसलमान रूल करते थे, क्योंकि जब से क्रिश्चियंस ने आके रूलिंग शुरू की उन्होंने हिस्ट्री खत्म कर दी। जब कोई काबिज होता है वो इस तरह काबिज होता है जो कि इंटीग्रेट करना नहीं चाहते लोगों को, जबकि मुसलमानों का इंडिया में वो किरदार नहीं था। इट इज इंडियंस कहेंगे जी फलां फलां चीज डिबेटेबल है, लेकिन इन देयर ओन बुक्स अगर दे लुक एट देयर ओन हिस्ट्री इट्स नॉट पॉसिबल टू एक्सेप्ट व्हाट दे से। दूसरी इसमें यही बात है, इंडिया को इस चीज के ऊपर सपोर्ट और इंडिया को यूज किया जाता है इसीलिए कि इंडिया एक बहुत अच्छी स्टेटमेंट है टू प्रूव टू द वर्ल्ड के देखो अच्छे लोग, आम इंसान जो कि मुसलमान नहीं है, इट इज वेरी हार्ड फॉर देम टू लिव विद मुस्लिम्स, तो मुस्लिम्स आर डीमन्स, टू डिमोनाइज मुस्लिम्स। बॉस क्या कर रहे हो? नेतन्याहू शैतान है। नेतन्याहू कैमरा साफ कर। कैमरा साफ हो गया, दूसरा हाथ का है। साफ हो गया। खैर टू डिमोनाइज ये एक बहुत बड़ी बात है कि आम मुसलमान इंसान को ना, हु इज अ नॉन कॉम्बिटेंट, हु इज अ कॉमन मैन इन वट एवर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, टू डिमोनाइज इवन दैट। इसीलिए देखो ये आज भी यही कोशिश करते हैं बाहर। यार मुझे समझ एक बात नहीं आती,
How is it possible for a normal civilian living in any part of the world to accept the statement that yes, it is important to kill a 12 years old child because he will grow up to become a terrorist? People are saying this, they logically think that they are saying or supporting a right statement. Imagine if a Muslim was saying this, that oh, I am killing a Hindu in my country because he's 12 years of now, 20 years later he will become a terrorist, and that is why it is important to kill him. What kind of justice and what kind of law is this, and what kind of justice is this? कि सजा खता से पहले, कि अभी आपने गुनाह किया नहीं है उससे पहले ही आपको सजा दे दी जाए कि आप पॉसिबली वो गुनाह करेंगे. एंड दिस इज अ वेरी यार वो अमेजिंग. एक फेज का शेर था, इस हवाले से एक फेज का शेर था, क्या था वो, क्या कहते हैं यही यार? यही है ना, सजा खता से पहले. ये हाँ हाँ, इस बड़ी मशहूर खता से पहले सजा पोएट्री दी का जाए, है ये, वो है ना, चली है रस्म के कोई ना सर उठा के चले. आय सर हाय! उठा के जी चल चले, ये बिल्कुल देखते बिल्कुल हैं बिल्कुल। यार, चली है रस्म कोई. यार ये वाली बात बहुत इंटरेस्टिंग है ना कि व्हाई द हेट फॉर द मुस्लिम्स, हालांकि हिस्टोरिकली मुस्लिम्स हैव बीन द मोस्ट पीसफुल लीडर्स ऑफ मैं द आंसर वर्ल्ड. करूं इसको, मैं हम्म. बेशक आंसर करूं मेहदी इसको। भाई, बेशक देखो, मेहदी. इसका आंसर बड़ा एक स्ट्रेट फॉरवर्ड सा आंसर है सर, हाथ वेरी खड़ा स्ट्रेट कर फॉरवर्ड लेते, आंसर। आप क्लास में ठीक है, थोड़ी बैठे हैं मेहदी भाई. देखिए मैं आपको बताता हूँ एक रीजन, इसका जी, रीजन क्या है। रीजन ये है कि सर, मुसलमान जहाँ पर स्टेबल रहे हैं, जिन जगहों में मुसलमानों ने, उन जगहों पे पहली बात तो या देखो, इस्लाम एक नया रिलीजन है एज कम्पेयर टू जितने रिलीजन्स हैं, जुडिज्म हो, बेशक, चाहे हिंदुइज्म हो, चाहे क्या कहते हैं क्रिश्चियनिटी हो, एक नया रिलीजन है। और बेशक. इनके लोगों की एडहेरेंस टुवर्ड्स रिलीजन बहुत ज़्यादा है, मतलब बहुत ज़्यादा है। ठीक है, सही. हत्ता कि जो अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स ज्यूस है ना, वो फिर कभी मुश्किल से आकर मुसलमानों के साथ कंपेयर करते हैं अपनी एडहेरेंस को। अदरवाइज वी सही. आर लाइक वेरी मच क्या कहते हैं अटैच्ड टू अवर रिलीजन, इट्स सिंपल, पहली बात। दूसरी बात, माशाल्लाह. सही. न सिर्फ ये बात है, अगली बात, मुसलमान जहाँ भी जिन कंट्रीज़ में रहे हैं, बड़ी तादाद में रहे हैं, उन्होंने तरक्की की है। मुस्लिम गोल्डन एज को आप जाकर देखो, इन विद द आइडियोलॉजी ऑफ इस्लाम, मुस्लिम्स हैव द कैपेबिलिटी टू टेक ओवर एनी कंट्री, एनी स्टेट, और अपनी आइडियोलॉजी को फैलाना। दुनिया में सबसे पहले नंबर पे फैलता हुआ रिलीजन है भाई इस्लाम। ठीक है? सही. दो मुसलमान बदनाम भी किए गए, इस्लामोफोबिया फैलाया गया, क्या-क्या, क्या नहीं किया, और सर ये बात हज़म नहीं होती है। इट इज़ अ स्ट्रेट फॉरवर्ड थिंग। मतलब आप जितना भी कहो कि भाई ये नहीं, ये रीज़न वो है, भाई रीज़न एंड में जाकर यही है कि मुसलमान तेज़ी से बढ़ रहे हैं दुनिया में, मुसलमानों का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है, वेस्ट बढ़ गया है। सबसे ज़्यादा परेशान ये इस बात पे नहीं हुए, पता है, 7 अक्टूबर के वाक़ये पे। 7 अक्टूबर के वाक़ये के बाद जो पूरी दुनिया में एहतजाज हुए ना, अमेरिका के अंदर, न्यूयॉर्क के अंदर, वाशिंगटन के अंदर, पेरिस, जर्मनी और फ्रांस में मना किया। आपको पता है, इट वाज़ ऑफिशियली बैन किया गया था कोई एहतजाज कराने से, राइट? फिर भी लोग बाहर निकले, इतनी लाखों की तादाद में निकले सर जी। शायद हिस्ट्री में, लंदन की हिस्ट्री में इतना बड़ा प्रोटेस्ट नहीं हुआ होगा जितना प्रोटेस्ट हुआ है वहाँ पर, ठीक है? किस तो बारे में वेस्ट प्रोटेस्ट? के, यहीं इसराइल के मामले में भाई फ़लस्तीन के हक में इतनी बड़ी-बड़ी रैलियाँ निकली हैं, और अच्छा, न ये सिर्फ़ आप अभी मुसलमान निकले वाले हैं उसमें। प्रोटेस्ट की बात कर रहे हो, यस, सही. न सिर्फ मुसलमान निकले हैं, बल्कि ये क्या कहते हैं, वो भी निकले हैं। तो इनको ज़्यादा खौफ अभी इस बात से तारी हो गया है। ये जो वेस्ट में फ़ौरन अभी एक वो लहर चली है, इमिग्रेशन की चीज़ों को हमने देखना है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, ये सारी बातें इसीलिए हो रही है। ये जो नीदरलैंड में जो प्रेज़िडेंट अभी सिलेक्ट हुआ है रिसेंटली, ये 7 अक्टूबर के वाक़ये के कोई 1 हुँ, महीने बाद या 2 महीने बाद ये सिलेक्ट हुआ है। ये क्यों सिलेक्ट हुआ है? उसका था ही नहीं, वो कह रहा था कि देखो, मैं कह रहा था पहले, तुम लोग को मेरी बात नहीं मान रहे थे, मुसलमान आके कब्ज़ा कर रहे हैं हमारे ऊपर। देखो हमारी सड़कों में, हमारे हर जगह हमारे लोग तो नहीं, मुसलमान एहतजाज कर रहे हैं बाहर निकल के, हमारी आइडियोलॉजी को कौन सपोर्ट करेगा? सो मुस्लिम इस्लाम तेजी से फैलता हुआ रिलीजन है, और ये बात हजम नहीं हो रही है सर दुनिया के दूसरे रिलीजन्स को। इट इज सिंपल, नहीं हो रही है, जिसकी वजह से इस्लाम को एज अ थ्रेट दुनिया में, अच्छा, नॉट ओनली टुवर्ड्स दुनिया के जो पॉलिटिकल सिस्टम है, उन वो भी इस चीज़ से डरते हैं दैन जा जाकर, क्योंकि आप जहाँ पर भी एक्टिविटी देखोगे ना, रिलीजियस एक्टिविटी, यानी रिलीजियस रेबिलियन टाइप का, हुँ. गलत करने वाले लोग, जैसे आप देखोगे पाकिस्तान में डॉक्टर इसरार था, या दूसरे बड़े-बड़े मौदूदी साहब थे, उसके बाद भी बाज़ लोग आए हैं उसके पाकिस्तान के अंदर, जो कि हमारे रिलीजियस लीडर्स पॉलिटिकल मूवमेंट्स को लीड करते थे, ये कहकर कि सही. हमने अल्लाह का निज़ाम और उसके निज़ाम को देखना। दुनिया में मुझे बताओ, क्रिश्चियनिटी की कहीं है कोई? जुडाइज़्म की कहीं है? हिंदूज़ की भी अपनी कहीं है? बीजेपी वाले जो है ना, आरएसएस एंड बीजेपी, ये रिएक्शन के तौर पे बने थे। ये कह हुँ. रहे थे कि हमारे हिंदुओं के यहाँ नहीं है, मुसलमानों के अंदर ये चीज़ है। ये इस चीज़ से बने हुए हैं सारे। अदरवाइज़ अगर आप देखो तो दुनिया में जो पॉलिटिकली एक्टिव हैं, वो मुसलमान हैं, और रिलीजन को लेकर पॉलिटिकली एक्टिव हैं। वो ये नहीं कहते हैं कि रिलीजन अलग है। वो सही. ठीक है, आम मुसलमान तो कहता है भाई सियासत अलग है, बट नहीं, इट्स नॉट लाइक दैट फॉर मुस्लिम्स।
एट द एंड जाकर मुसलमान हक और बातिल की बात को कराते हैं, और ये चीज़ बेशक। खटकती है, डरते हैं इस चीज़ से। एंड इसके अलावा और कोई रीज़न नहीं है मुसलमान बुरे लगने का। क्या रीज़न है भाई और? क्या हमारी शक्ल बुरी है? इंडिया वालों से तो प्यारे हैं। मतलब एक बात बता रहा हूँ, "ए भाई ये काट भाई, ये काट, गलती से सॉरी बेटा जस्ट काट, इसकी तो मीम ये बनेगी, काट।" मेहदी भाई पेज पे जाएगी। ये देखो, देखो मैं यही कह रहा हूँ ना, क्या कुछ शक्ल हाँ। काले हैं क्या? ब्लैक हैं क्या? आप ब्लैक के अबे अगेंस्ट हैं? ये क्या बात हुई यार? ठीक है? मतलब नहीं, ब्लैक्स को एक मैं कह रहा हूँ कि उसको स्टीरियोटाइप का निशाना बनाया जाता है। तो मैं कहता हूँ चलो ब्लैक हो तो बनाया जाए, ठीक है। ठीक है? अच्छा। या कोई टेररिस्ट ग्रुप है जो भाई या हर वक़्त हम कोई टेररिज़्म करते हैं। औरतें नहीं हैं जो भाई, हमसे नफ़रत की जा रही है। ठीक है। सो लिहाज़ा हम इस कोई चीज़ को ट्रांसेक्सुअल्स हैं। क्या कहते हैं यार, इस चीज़ को इस तरह देखने की ज़रूरत है कि अच्छा। मुसलमानों को इवन चाइना, हम बड़े फ्रेंड्स विद चाइना है ना, वी आर लाइक वेरी फ्रेंड्स विद चाइना। ये चाइना के अंदर भी ये जो उइघुर के जो क्या कहते हैं मुस्लिम्स हैं, वहाँ पर बेशक, जो हालत कर बहुत रहा है चाइना, ज़्यादती है, बहुत गंदी सूरत हाल। बहुत ट्रू, ज़्यादा। इट्स वेरी वेरी बैड सिचुएशन वहाँ पर भी। क्यों? क्योंकि एवरी क्या कहते हैं नेशन, अच्छा, वेस्ट क्यों फँसा हुआ है? वेस्ट के अंदर ज़्यादा मुसलमान क्यों तरक्की क्यों कर रहे हैं, पता है? क्यों कर वे रहे हैं? वेस्ट इसीलिए फँसा हुआ है कि उन्होंने अपने लिबरल आइडियाज़ लाए ना सामने। उन्होंने कहा, "भई देखो, आप टेररिस्ट हो मगर हम लिबरल हैं। हम सबको इक्वालिटी देंगे, हम सबको क्या कहते हैं आगे बढ़ने।" तो ब बस ठीक है, इक्वालिटी की तरफ है तो मुसलमान कैसे हैं भाई इक्वालिटी के अंदर? निकल जाएँगे आगे आपसे, और निकल गए। और वो एक पाकिस्तानी का इंटरव्यू देखा है? मैं आपको वो इंटरव्यू दिखाता हूँ, उसका 1 मिनट का इंटरव्यू है। उससे नहीं कोई तो वैसे कनाडा के अंदर या अमेरिका के अच्छा। अंदर, 1 मिनट इधर भाई, उससे कोई पूछता है ना कि भाई आप जो है ना ये मुसलमान इतने सारे बाहर निकले हुए हैं, मुसलमानों की तादाद बढ़ रही है, आप इसके हवाले से क्या कहते हैं? तो वो सामने से क्या कहता है पता है? अच्छा सॉरी, उससे सवाल ही नहीं, उससे सवाल ये होता है कि तुम शरीयत चाहते हो यहाँ पर? वो बड़ा एक सख्त किस्म का रिपोर्टर टाइप का होता है, ऐसे ही ना हुँ। तंग करने के लिए, तुम लोग यहाँ पर शरीयत चाहते हो? वो क्या कहता है पता है? ही इज़ अ पाकिस्तानी गाय, थोड़ा-सा मतलब वो स्ट्रेट फॉरवर्ड सा बंदा है सारा सा। और हम ही वो कहता था है तो देखो भाई, पाकिस्तानी ही होगा। हाँ, कहता है कि तुम लोगों की जो पॉपुलेशन है ना, तुम लोग के एलजीबीटी और दूसरे चक्करों में लगकर तुम्हारी पॉपुलेशन हो गई आधी से भी कम, और आधी मुसलमानों के से अंदर भी हम लोग पॉपुलेशन करते हैं आराम से, ठीक है। कहता है कि अगले सही। इतने सालों के अंदर हमारी पॉपुलेशन बढ़ेगी, फिर हम शरिया ला रहे हैं। अभी नहीं ला सकते हैं, अभी लॉ आपका है, आपकी तादाद ज़्यादा है। जब हमारी तादाद ज़्यादा होगी तो लेजिटिमेट है ना, वी कैन ब्रिंग शरिया लॉ, तो हम हुँ। लाएँगे डेमोक्रेसी के नहीं, अंदर। लेकिन ये एक तो मुझे नहीं, ये भी एक बड़ी अजीब बात है, ऐसे कहने की बात है जी, शरिया लाएंगे, शरिया लाएंगे। इतने मुस्लिम ममालिक हैं दुनिया में, एक बताओ कहाँ है शरिया लॉ? अरे अरे साहब भाई, ये एज़ वैसे अ टर्म एक के तौर पे इस्तेमाल की क्लैरिफ़िकेशन जाती है वेस्ट की साइड से, वही कह वरना रहा हूँ कहाँ ना, शरिया है? वेस्ट का ये एम ही वेस्ट का बना है प्रोपेगेंडा है ये। ये मगर सिलेक्टिव इस लड़के का इग्नोरेंस जवाब चिकना है था, फ्रॉम उस द लड़के का जवाब सही था। सिलेक्टिव ऐसे लोगों को यही इग्नोरेंस है जवाब दिया जाता है। सिलेक्टिव इग्नोरेंस है ऑन द एंड ऑफ, देखो, एक पॉलिटिशियन की बात, एक गवर्नमेंट ओहदा होल्ड करने वाले की बात, और एक कॉमन मैन की बात में फर्क होना चाहिए। बेशक। तो जो वेस्ट के मुझे एतराज वेस्ट के किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस होल्डर से या किसी हुँ। सियासतदान से नहीं होता, वो अपने एजेंडास के लिए बात करते हैं बेशक। मसला होता है मुझे पीपल हु फॉल इनटू दिस प्रोपेगेंडा, कॉमन मैन हु स्टार्ट्स टू बिलीव दिस थिंग। क्यों, व्हाई? देखो, मैं सिलेक्टिव इग्नोरेंट बंदे को, आई विल नॉट नेवर फॉरगेट अ पर्सन फॉर सिलेक्टिव इग्नोरेंस। आई कैन नॉट जस्ट से लाइक इट्स नॉट देयर फॉल्ट बिकॉज दे आर इग्नोरेंट। दे टेक प्राइड इन द, they they tell me that they're living in the age of information, and all the information that was before, that is now, and that will be after is accessible to them. It's just 2 clicks away. And then after all of that, if you are deliberately believing or easily falling into a, so like it's such a propaganda that can be debunked very easily, hundreds and thousands of Muslims are living in the West, there is no terrorism in the West. How? It does not mean that, oh, law enforcement in the West is so good that there is no terrorism. No, that is bullshit. So हुँ। this propaganda can be debunked very easily. People who are not biased, who are not racist, will actually ponder for a moment, and they will realize that, okay, wait a minute, like it's not like how they're telling us to be. These things are not as such. वैसे अगर Hmm. अगर अब देखा जाए तो ये तो मतलब पहली बात तो ये है कि जिस तरह मेहदी कह रहे हैं कि यहाँ पर एक जनरल बिलीफ है कि जो हैं जो इस मुसलमान हैं ये टेक ओवर करने के चक्करों में हैं, ठीक है? तो पहले ही तो क्या आप लोग को लगता है कि ये किनका जेन्युइन बिलीव है? अगर अगर एक पॉलिटिशियन लेट्स से ये बात कर रहा है, डज़ ही एक्चुअली बिलीव इट या तो ये बस एक टैक्टिक है? दूसरी बात ये है कि अगर तो लेट्स से दे एक्चुअली बिलीव इट, सो डू दे बिलीव दैट वी कम हियर विद द इंटेंशन ऑफ स्प्रेडिंग इस्लाम, और डू दे बिलीव दैट Now इस्लाम इज समथिंग let me दैट विल answer this. नेचुरली स्प्रेड इटसेल्फ? ये देखो, when a politician is saying that, ये जो सवाल ना, is their fear, are their fears actually genuine, or they're just saying this? No, Their like fears, do they believe in what they're saying? yeah, To any they extent? do believe it, they do believe in it, but not in the way they are telling
the world that they believe in it. Yes, They don't yes, believe in it in yes. the way that, oh, they're actually scared because Muslims are terrorists, or they're not scared because they believe Muslims want to bring No, no, Sharia no. over here. They That's don't also not believe my they question. My don't believe Muslims are going to come and are coming into the country with these intentions of taking okay. over their country. They don't believe that, oh, any Muslim, or not all Muslims, but even some Muslims are coming here so that they can somehow take over these countries. They don't Hmm. actually believe in this. But why they keep on insisting on these ideas? What is the background thought is, they have realized for a long time, they know this idea that the societal, the moral values that these people live on are standing on thin air. It does not have a solid base. The ideas they have been propagating for so many years, for more than 100 years, that the ideas of liberalism, which they call it, which is not liberalism actually, but they call it liberalism, and they portray these ideas of freedoms and liberalism, and they know these are not substantial ideas. They're standing on thin air, and they Muslims are living here in these lands peacefully, integrating with the normal societies of Europe. The indigenous normal Europeans will start to realize the fact that the way of life they have been told is the supreme is actually an inferior way of life. They will realize that, and that is what they're trying to protect. This is their insecurity, and this is not just saying it. They saw it happen when Muslims started ruling parts of Europe. For example, Spain, and parts of Spain and Portugal and Italy, where these Hmm. Muslims established actual empires in those Hmm. times. They saw, okay, it's a debatable topic about what kind of Muslim empires were they actually, but a common man who was of Muslim mindset started to live in Europe. What started to happen was they started to influence and inspire the local Europeans and started to change their beliefs, not religiously, but morally. People of Europe started to realize that मेरी somehow स्क्रीन से ये कमेंट हटा देना. the way of life is wrong. Whatever they are Okay, believing in okay. is wrong. And you see this as a trend that, for example, until Muslims entered Spain and Europe and started ruling this, for example, even Jews, in those times, Jews were persecuted all over Europe. Jews were killed and treated as third class citizens everywhere in Europe until Muslims entered it, and then and only then people had equal rights. People were equal citizens of countries ruled by Muslims in Europe. M- Christians, Europeans started to realize that, okay, the way of life they had been told to live by is wrong, and there is something better to live by. After that, once again, when the power went back to Europeans, until now they have been trying to remove those values and trying to create a dystopian society based on, I don't know what kind of beliefs and what kind of moral ideas, which is unempathetic, unhumane. It disconnects humans from their human nature. They have been trying to do this, and now again their insecurities have risen up again because they have seen an influx of Muslims, peaceful, Would you loving, caring Muslims living in Europe, and they have realized this again. You will see this, that whenever you live in white circles or indigenous European circles, they start to get inspired and influenced by बेशक. a layman Muslim who's just living his life normally. So this वुड this यू I think is the biggest fear. वुड यू से कि इन्होंने अपने जो है हाथ पैर जिस तरह उर्दू में कहते हैं ज़्यादा मारना शुरू कर दिए क्योंकि इस्लाम इज़ बेसिकली द लास्ट standing defense against their True. the Satanist view of the world. Is that one of the bigger reasons that Islam is the last defense against this satanic rule over the world? Yeah, it's the only religion left, I would say. I mean, For okay, if sure, someone would I even go definitely ahead, agree with that. I mean, if someone would even go ahead and think or say it as like, oh, you're using the term Satanism and da da da, it's a conspiracy theory. For them, I would even go ahead and say like, okay, even if all religions are Also, I not would real. like to add one more thing here. When we say Islam is the last religion, believe me, we are not happy about it. We are very sad that Christianity doesn't exist anymore, Exactly, that is or the problem. That Judaism doesn't it is exist the how it should be only existed. religion where people, no human has taken power. No Hmm. human has the capability to take power in this religion or take the religion into their own hands. There is Hmm. no human, dead or alive, who has any power as such. For example, Christianity failed. For that particular reason, humans took it into their hands.
The problem they have with Islam is just that they believe, even if someone believes, oh, there is an imaginary God and not a real God. But this is the problem. Muslims believe in that even imaginary God so steadfastly that they are not going to become devils, or they are not going to become gods on earth. And this always creates space for the real humane morality to exist in the world. Until there is even a one Muslim, not even a religious very following Muslim living in the world, but a Muslim who knows his religion living in the world, morality in humans will still persist. It will मोरालिटी still, को उर्दू में गैरत कहते हैं। नहीं 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 नहीं, मोरालिटी को इंसानियत, गैरत इंग्लिश में क्या है? आई थिंक इट इज़ मोरालिटी की गैरत तुम्हारी जाग गई है, योर मॉरल्स हैव रिज़न और इखलाक, अवेकन इखलाक, एंड इखलाकियात, और गैरत गैरत, इंग्लिश में ऑनर, ऑनर या ओके या भाईजान ये एनीवेज या देखिए अभी ये जो टॉपिक लेट्स मैंने मूव पहले टू हमने दिस। सिलेक्ट किया था, ये जो सारी राज है, क्या कह रहे हैं ये, आप पढ़ें जरा साथ भाई इसको। Netanyahu sold his soul to the devil like Faust. Who's Faust? Veteran TV presenter Sari Raz used to keep her views private. Now at 82, she's ready to voice her worries about the next Israeli government. Baby Netanyahu sold his soul to the devil like Faust. He sold the soul of this nation, accuses veteran journalist Sari Raz, current affairs and तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल मेहदी भाई, हु इज दिस फास्ट? ये जो सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट है, ये जो जर्नलिस्ट है, ठीक है, ओके शी हैज़ बीन क्या कहते हैं, जो है ना, जर्नलिस्ट इन, और ये टीवी प्रेजेंटर रही है, रेडियो प्रेजेंटर रही है इन इसराइली, क्या कहते हैं, जो है ना, उसमें न्यूज़ में और रेडियो में ऑफिशियली गवर्नमेंट लेवल पे, ठीक है। और इसका काफ़ी क्या कहते हैं इम्पैक्ट रहा है उधर। उसके बाद इसने इस तरह की बातें, जब इसकी एज आने लगी 82 में, तो फिर जाके इसने बातें खोलना शुरू की कि भाई ये जो हम जो बात कर रहे हैं, मैं नाज़रीन को बस इतना सा बता दूँ, ये जो नेतन्याहू के बारे में जो एक बात है कि ही हैज़ सोल्ड हिज सोल टू द डेविल, ये वाक़ई इसके ऊपर शैतान का गलबा है। ना सिर्फ गलबा है, शैतान ने इसको मग़लूब कर दिया है और ये शख्स अभी शैतान के नरगे में है, शैतान के नरगे से बाहर निकल के कुछ नहीं कर रहा है। इस शख्स को एक प्रोजेक्ट मिला है शैतान की तरफ से कि आपने जितने बच्चों का खून है, वो होता है ना, वो बच्चों की जो बलि चढ़ाते हैं। आपने देखा होगा जो सैटेनिक वो होते हैं, उसमें यूजुअली व्हाट दे डू इज़ दे किल बेबीज़ एंड उसके ब्लड इनोसेंस। की सैक्रिफिशियल वो करते हैं, जो है ना, प्रेज़ेंट करते हैं टू द डेविल। So this is same. Netanyahu sold his soul to the devil. It is true. और इसमें न सिर्फ एक बंदे ने नहीं, he has been क्या कहते हैं accused of this thing many times over. मेहदी भाई, सबसे पहले ठीक मेरे है। ख्याल से एक जो इसी टॉपिक पे थोड़ी इसके बैकग्राउंड पे अगर बात की जाए, तो हाउ कैन we three people sitting here talk about Satanism and act like it's not a conspiracy theory? I think to answer this question is very important so people can take this seriously. Because if someone, if in the Western world, let's say someone hears this Netanyahu sold his soul to the devil, it's just a joke. So matlab, how are we people sitting here talking about Satanism? Is it not just a conspiracy theory or something to laugh at? देखो, इसमें मैं बड़ी आपको एक क्लियर बात बताऊं। लेट अस जी इसको हम ऐसे ही रखें। यूट्यूब में सही से नजर आ रहा है? आप देख रहे हो यूट्यूब में? जी जी, आप मुझको देख नहीं रहा है? यूट्यूब पे नहीं देख रहा, लेकिन इधर तो सही नजर आ रहा है। ठीक है। तो हाँ, इसमें अब चीज़ क्या आती है, देखिए हर इंसान के ये बातें अगर हमारे नाज़रीन को इन बातों की इन बात देखो, बाज़ औक़ात क्या होता है, बाज़ औक़ात अगर जिस शख़्स के पास नॉलेज नहीं होती किसी ख़ास टॉपिक की, उसके लिए हर एक टॉपिक क्या है, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है। अगर आज से 100 साल पहले के एक बंदे को 200 साल पहले के एक बंदे को हम कब्र से निकालने के बाद कहें कि भाईजान लोग जहाज़ों में बैठ के इस तरह वहाँ जा रहे हैं, वहाँ से यहाँ आ रहे हैं, बड़ी कॉमन सी बात है। 700-800 लोग भी एक ही वक़्त में जो है ना जहाज़ में फ्लाई करके एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, तो ये उसके लिए कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है भाई। सही। ठीक है? कॉन्स्पिरेसी थ्योरी आपकी नॉलेज की लिमिटेशन की बुनियाद पे बाज़ औक़ात ठीक है, ऐसी लोग बातें बना देते हैं लोग, बट समटाइम्स बाज़ टॉपिक्स के ऊपर लोगों की एक्सटेंसिव रिसर्च होती है। सही। ठीक है? लोगों ने अपनी ज़िंदगियाँ ज़ाया की होती हैं।
वो बातें फ़िज़ूल नहीं होती हैं। बाज़ लोग तो शुरू करते हैं, बाज़ लोग कुछ लेकिन चीज़ें एक इस तरह शुरू अनलिमिटेड करते हैं फॉर रिसर्च के एग्ज़ाम्पल। साथ भी बंदा अनएजुकेटेड रह सकता है। मतलब व्हाट नहीं, देखो ट्रू, अगर आपकी नियत ये है कि आप अपने आप को सही प्रूव करो, अभी जैसे हमने कहा कि भाई नेतन्याहू के ऊपर शैतान का गलबा है और हम इसको प्रूव करने के लिए एविडेंस ढूँढे, हमें एविडेंस मिल जाएगा बहुत सारा, सही। ठीक है? मगर और अगर मेहदी के बारे में बात हो जाए, हैदर का हो सकता है मिल जाए दुनिया को, बट द प्रॉब्लम इज़ क्या वो लोग जो न्यूट्रल लोग हैं, जब वो इस चीज़ को देखते हैं, तो उनको क्या नज़र आता है? ये इनका पूरा एक बड़ा सर ये जो ज़ायनिज़्म है ना, ज़ायनिज़्म, हुँ, हम क्यों कहते हैं? देखो जो ज़ायनिस्ट हैं, इनके और फ्री मेसन्स के आपस में और जो इल्युमिनाटी हैं, इनके आपस में इनका जो हिस्ट्री पूरी नाइट टेम्पलर्स की जो हिस्ट्री आपको नाइट टेम्पलर्स का पता है ना? जी, जी, जी। बेशक। नाइट टेम्पलर्स ये जो उसमें थे क्या नाम है अपना असैसिन्स जो क्रीड में। 12-13 लोग थे शायद। हाँ, नहीं क्या असासिन्स क्रीड में ये नाइट जो टेम्पलर्स हैं ये यरूशलेम में होते थे। ये इस चीज़ों की इनके जो मुकद्दसात की बात चीज़ों की हिफ़ाज़त करने के चक्कर में इस तरह की चीज़ों में लगे होते थे ये। वो सही। जो बॉक्स सुलेमानी जो बॉक्स था ना, जो वो था वो इस तरह की चीज़ों की जो पुरानी नवादरात हैं, द होली उनको अपने उसमें रखते-रखते इन चीज़ों को सीक्रेट बनाते-बनाते सीक्रेट सोसाइटीज़ बनी हैं इनकी, जिसमें से फ्री मेसन्स हैं। अगर इनकी जो कॉलेज आप देखो, ये जिन जिन कॉलेज में ये पढ़ा है, क्या नाम है, नेतन्याहू और जिस ग्रुप में इससे जो बीसीजी ग्रुप है, जो दुनिया का 3 मेन जो क्या कहते हैं, जो बड़ी कंपनियाँ हैं दुनिया में, उनमें से एक बीसीजी है। हुँ, क्या ये बिज़नेस कंसल्टेंट ग्रुप है, बहुत बड़ा दुनिया का, सबसे बड़ा शायद ये सही, है। तो ये उसमें एज़ ए बिज़नेस कंसल्टेंट के तौर पे इसने काम किया है, इकोनॉमिक कंसल्टेंसी की इसने फ़र्म में काम किया हुआ है इसने 2 ढाई साल। तो वहाँ पर इसके दोस्त कौन बने, इसको पैसे कौन-कौन लोग दे रहे हैं, जो 3-4 लोगों के नाम हैं, जो मैंने थोड़ा इसके ऊपर स्टडी किया। तो उन सब सही, के सब के रूट्स ज़ायनिज़्म से मिल रहे हैं और फ्रीमेसन के जो क्या कहते हैं, जो जो आइडियल्स हैं, उनके साथ जाके इनके रूट्स मिल रहे हैं। तो भाई सही, अगर देखो, अगर एक बंदा हमारे सामने ऐसा आता है ना, जो कि बड़ा क्लियर किस्म का बंदा है, उसके कोई पीछे 2 नंबर रूट्स नहीं हैं, जिस बंदे की ब्रिंगिंग अप ही ऐसे स्कूलों में, ऐसे कॉलेजेस में हुई है, जहाँ पर फ्री मेसनरी का अच्छा खासा किस्म का एक वो है, तो हम सीधी-सी बात है हम तो और ये जो फ्री मेसनरी जो लोग कहते हैं कि ये एक क्या कहते हैं फेक चीज़ है, आप भाई अपनी नॉलेज को बढ़ाओ जाकर। हम आपको समझाने नहीं के बैठे प्रूफ दिखाने के लिए नहीं बैठे हुए हैं। वी विल टॉक अबाउट दिस टॉपिक। अगर आपको समझ नहीं जाएगा नॉलेज बढ़ाओ, पढ़ो भाई अपना। अगर अगर आप ये समझते हो कि मेरे सामने इस वक़्त मैं मेहदी मिसाल के तौर पर, मेरे सामने इस वक़्त साद और हैदर बैठे हुए हैं। अगर मेरी सिर्फ़ रियलिटी ये है तो मैंने अपने आप को एजुकेट करना है कि भाई मेरे अलावा भी दुनिया में बाहर कुछ हो रहा है। सही। अगर मुझे नहीं पता है मैं हर चीज़ को कॉन्स्पिरेसी थ्योरी कहूँ। नहीं तो हाँ, मेरे सामने हम एक ऐसा बंदा कहे कि कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है जिसने इस टॉपिक को स्टडी किया हो। हम इसको जो है सैटेनिज़्म को इस हवाले से हम क्या क्या सैटेनिज़्म क्या है? व्हाट इज़ सैटेनिज़्म? मतलब ये कोई बैठ के वहाँ पे बकरियाँ-शकरियाँ काट रहे हैं, काला जादू मैं कर बताता रहे हैं हूँ, खून से कि मैं बताता मतलब हूँ, क्या है सैटेनिज़्म व्हाट इज़ इट? मैं बताता हूँ। साथ फर्स्ट ऑफ में ऑल डोटा खेल रहा है? नहीं, नहीं। देयर देयर अच्छा, आर ये देयर आर सीरियल फ्यू ऊपर देख रहा देयर हूँ। आर फ्यू एस्पेक्ट्स टू इट। मैं आपको बताता हूँ। एक इसका इकोनॉमिक सही, एस्पेक्ट है। जो लोग बहुत ज़्यादा पैसे-वैसे कमा के बिलियंस में कमा के एक लाइन पे आ जाते हैं, दे आर यूजुअली कॉल्ड अपॉन बाय अदर्स जो कि ऑलरेडी ऐसी जगहों पे मौजूद हैं। उनको बुलाकर कहते हैं कि भाई आ जाओ, नाउ वी हैव अ प्लान टू टेक ओवर द वर्ल्ड। और सही, शैतान भाई, हैदर भाई आपके पास कभी नहीं आएगा, साद के पास कभी नहीं आएगा, मेहदी के पास कभी नहीं आएगा, जो कि अपनी लाइफ के स्ट्रगल में लगे हुए हैं, उनके पास आकर कभी नहीं कहेगा कि मैं तुम्हें ये ऑफर कर रहा हूँ, ये करो। नो, इनकी प्लानिंग जो लोग वाक़ई दुनिया को कंट्रोल कर सकते हैं, दुनिया को ऐसे लोग मौजूद हैं दुनिया में, दे कैन कंट्रोल द वर्ल्ड, होल वर्ल्ड इकोनॉमी से लेकर तमाम एस्पेक्ट्स में कंट्रोल कर सकते हैं। तो ऐसे लोगों को बाकायदा इनकी मीटिंग्स होती हैं आपस में एंड आई बिलीव पर्सनली, चाहे अब इसको कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी का है जो कहना कहते, बट आई बिलीव दे हैव अ कॉन्टैक्ट विद सैटर्न द डेविल एंड वो उससे इंस्ट्रक्शंस लेते हैं एंड उसकी उसी की मदद से ये लोग आगे बढ़ रहे हैं। अदरवाइज़ ये इतना जिस तरह 12,000 बच्चों को इसने कत्ल किया है इस शख्स ने, नेतन्याहू किलिंग 12,000 बेबीज़, सही है ना? इफ ही इज़ नॉट वर्शिपिंग द डेविल, व्हाट इज़ ही डूइंग? ठीक है ना? अ ह्यूमन बीइंग, अ सेन ह्यूमन बीइंग कैन नेवर इमेजिन दैट दिस इज़ एन एप्रोप्रिएट क्या कहते हैं और प्रोपोर्शनेट रिस्पॉन्स फ्रॉम द साइड ऑफ इज़राइल टुवर्ड्स द पैलेस्टीनियन किड्स एंड वुमेन एंड क्या कहते हैं सही। एंड द ओल्ड पीपल। ये इट इज़ अनइमेजिनेबल। आई मीन देखो इस चीज़ को। यार चलो, गोइंग बैक टू द टॉपिक के, ये आम बंदा जो है इस बात पर बिलीव करता है ना, जब किस एक बात अजीब सी पर? बात पे, ये इसराइल को सपोर्ट करने वाली बात, फॉर मतलब मैं एज अ, मुझे एक बात नहीं समझ आती ना, मेरी डिलेमा ये है इस टाइम कि मैं एक मुसलमान पाकिस्तानी हूँ, तो आई कैन नॉट टॉक टू एनीवन लाइक हु इज अगेंस्ट फलस्तीन और हु इज एनीवन हु इज सपोर्टिंग इसराइल, आई कैन नॉट टॉक टू दैट पर्सन राइट नाउ। वो क्यों? सही है, क्योंकि देर इज नो पॉइंट, लाइक बिकॉज आई एम अ मुस्लिम पाकिस्तानी एंड दे विल नॉट listen to me, they no one is going to hear what I say.
When these people are looking at actual Muslims dying, why do you expect them to understand words? Why, when they cannot actually believe in visuals, why do you believe they will believe my words? Because see, that is why I'm trying to talk to them in their own. For example, huge parts of Israel, as of current day Israel, which are full of settlers, which have been brought from America, Europe, are internationally labeled as illegal settlements. Illegal settlements, not by a Pakistani, not by a Middle Eastern, by not by a Muslim. It is considered to be illegal settlements according to the international law. International law states that these settlements are illegal. When you know there are illegal settlements, Israel has been taking illegal settlements, it has been moving. Imagine these people, Europeans, they would not let you to come and settle in their countries as immigrants, yet they support the idea of settlements in these countries. What do you mean? Like tomorrow I can go to Spain and say like, oh, some hundreds of years ago my forefathers came to Spain and they were ruling this parts. Give me the passport for Spain now. They will tell me, Yeah. "Are you fucking Or I kidding me?" came here with my extended family. Let me build a little bit of Mm, walls here, and we will stay that's inside those fucked up. walls, slowly expanding. International law believes and states clearly you can just write, anyone in any part of the world right now can just type 2 3 words on Google and a list will come up of all the illegal settlements. These are the ones that are identified by the international law, which are available to a common man. Now imagine all those illegal settlements that are not even up there. So how can you be living in America and be a normal person who has nothing to do with anything, and now you're sitting there and telling me that, oh, it's the responsibility of these children dying is on Hamas, not on Israel. These people who are dead, 30,000, 40,000 people, blame Hamas, not Israel. What do you mean blame Hamas? Give me, okay, okay, I will believe you, but where is one visual from even the IDF that shows them actually killing any Hamas people? Who are they killing? I Hmm. don't know. No one knows. Where it has been going for so long that they should have been able to collect evidence. All At the least the IDF should have been able to collect, if they are such a state of the art military in the there world, and was they say they are the most humanitarian military in the world. So in the past 5 6 months after destruction and after see the mobilization of people and making people homeless, they're kicking out people and they have moved so many people out from Gaza. have you seen the leaked footages of the IDF army from their action camps? No. I have seen around at least 10, and all the people they killed were people who couldn't even pull a trigger on a gun because they were so fucking old. And this was, I think, I don't know how they got leaked. Maybe someone hacked, but they're on X now. And you will see how incompetent this army is. This is No, a totally incompetent no, army. And it's about, this is their mission, this is their goal. This is, they are competent in whatever they are told to do, and they are exactly doing what what their mission is. Their mission is not to fight Hamas. This is the proof that why for the past fucking 5 months you're not able to produce even one single evidence, a real evidence of what have you been doing so far over there. Why is there no proof of you actually target? Okay, you, there is proof of kids dying, there is proof of civilians being relocated to prisons Mhm. and whatever kind of shit they have been moved on to. These refugee camps are basically they're surrounded, you know, they're pushing them, and where is the proof for all this movement? It is And very again, heartbreaking. if Hamas is as evil as they claim, why hasn't had even a single Israeli hostage had a negative experience with them? Also, no, when they were offering the hostages to be taken back, where are these hostages and why didn't you take them? Why, where is this And communication? Why are you let's not showing it to the world? here. I think it's we can move back a little bit to Netanyahu. Does Netanyahu want these hostages to be killed? See, it's not about Netanyahu. This is Israel. This is not about Netanyahu. He will go. Someone else will come. See, this present day Israel is. That's where you and Mehdi differ. But See, continue. this is a आई डू continuation. डिफर हियर, ये सही कह रहा है हैदर This भाई, यहाँ पर मैं एक this पॉइंट is a बताऊंगा आपको बाद में। continuation of a process. This is not just him.
This is a whole state that was founded on this idea that it will be. There could have been many different faces. Exactly, I tell you the example, give the example of Yazid all the time. That Yazid in particular, yes, he chose to do all of that, whatever he did, but that was a part of the process. It could have been anyone else also, and he would have done this. They choose to do this by themselves, yes, but it could have been anyone else. This would still be happening. For example, look at their politicians right now, and this is not, for example, I'll tell you one thing again, this is not just Israel. Look at India, for example. This political party is the same as whatever is ruling Israel also right now. They are all of the same mindset. This is the whole. I'm very, like, now I look at the world, and I've started to believe in Okay, more here religious I scriptures. would let's see what Mehdi has to hear about this, and then there is something very crucial I want to ask that I would like to hear opinions on. But Mehdi, yeah, you differ from Saad. We have established that. So how do you differ on this? यस देखो ठीक है देयर हैज़ बीन अ पीरियड ऑफ एवोल्यूशन सिंस इज़राइल वाज़ फाउंडेड इन 1948 इसराइल का एक वो तब्दील होते-होते रिएक्शन यहाँ तक आ गया है। बट सिंस इफ यू सी मिस्टर क्या कहते हैं बिन्नेते, ठीक है? Hmm. ये नेतन्याहू बीबी, ये जब से पावर में आया, आफ्टर दैट थिंग्स हैव चेंज्ड ड्रास्टिकली। ही हैज़ नॉट ओनली डन सम ऑफिशियल थिंग्स जिसकी वजह से आई एम सेइंग कि यार इसने ये किया वो किया, अनऑफिशियली आप कुछ डॉक्यूमेंट्रीज हैं, यू विल बी शॉक्ड टू सी। आपको अगर आपको ये लग रहा है अपना साद भाई या हैदर भाई, अगर आपको ये लग रहा है कि पैलेस्टीनियन किड्स, पैलेस्टीनियन चिल्ड्रन या पैलेस्टीनियन पीपल हेट Israelis and Jews more as compared to the Jewish kids और द क्या कहते हैं जूइश चिल्ड्रन जूइश पीपल, तो वी आर लिविंग इन अ स्टेट ऑफ क्या कहते हैं यार Please इन द फूल्स clarify. ऑफ Please, पैराडाइज, इन द Mehdi bhai, फूल्स ऑफ clarify. पैराडाइज। Clarify, सर clarify. डू यू नो I व्हाट, didn't get it. Yeah. क्या डू यू आप नो ये व्हाट कह रहे हैं कि अगर हमें ये लगता है कि जो बच्चे फ़लस्तीन में बैठे हैं उनको इसराइलियों से ज़्यादा नफ़रत है, तो ऐसा नहीं है, जो से इसराइली ज्यादा बैठे हैं उनको ज़्यादा नफ़रत है, आप ये कह रहे हो? वो उनके अंदर जो सीड ऑफ नफरत है, अगर आप उनके बच्चों को बोलते हुए देखो अगेंस्ट नफ़रत टुवर्ड्स फलस्तीन, द फ़लस्तीन, हाँ, सही है। टुवर्ड्स अ फलस्तीनियन, बेशक, सर यू विल बी शॉक टू सी आई हैव एक सीन बच्चा सम छोटा सा वीडियोज़, कोई इट्स वेरी 6 डिस्टर्बिंग। 6 या 7 साल का बच्चा है, वो अपनी माँ से एक डॉक्यूमेंट्री में क्या पूछ रहा है, बताओ डॉक्यूमेंट्री होते तो बीच में आकर, डू यू नो व्हाट ही हुँ, इज सेइंग? हुँ। ही इज सेइंग कि व्हाई आवर गॉड अलाउड इस्माइल एंड उसकी औलाद, इस्माइल को क्यों पैदा किया गॉड ने और उसकी औलाद को क्यों पैदा किया? दैट्स व्हाट सर जी, आई विल किल एवरी अरब, आई विल किल एवरी क्या कहते हैं यार पैलेस्टीनियन, दिस इज वेरी कॉमन थिंग, एक्सेप्टेड थिंग, एक्सेप्टेड हैट्रेड। I have seen some videos coming out of their classrooms, but you're saying this happened after Bibi Netanyahu? यस, दिस हैपेंड आफ्टर बीबी नेतन्याहू। बीबी नेतन्याहू के आने के बाद इन्होंने स्कूल के करिकुलम में ऐसी चीजें ऐड कर दी कि नफरत ये नहीं कि भाई देखो, बाजों का डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है। फॉर एग्जांपल अगर आप देखो 2 मिनट के लिए, तो जो अफगानिस्तान के लोग हैं उनमें और हमारे में एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, वो हमेशा किसी न किसी बात पर लड़ते रहते हैं, हम भी उनसे लड़ते रहते हैं, राइट? वो सही। कहते हैं पाकिस्तान हमारे साथ बुरा किया, भाई हम लड़ेंगे, बट क्या डू वी हेट देम एज पीपल? नो। No. ओ भाई, इफ यू आस्क मी, इफ आई हेट जूस, आई डोंट हेट जूस, इवन द I जाइनिस्ट आई think डोंट हेट it's देम। it's not normal to hate यस सर, ये any हेट्रेड thing उनके like this. अंदर बनाई गई और ये नेतन्याहू के दौर में हुआ। सेटलमेंट्स, इलीगल सेटलमेंट्स को उन्होंने जिस तरह आगे बढ़ाया, ये सब नेतन्याहू का, और भी बहुत सारे लॉजिक्स हैं। खैर, एक पॉइंट आखिर में मैं ऐड करूं इसमें, हैदर भाई आप अपनी जो बात कर रहे थे इसके बाद आप कह रहे थे कि देयर इज एन इंपॉर्टेंट थिंग, आप वो शेयर करें, एक मैं बात उस पर नहीं, बात नहीं, कर आप लूंगा ख़त्म जब वो करें, वो खत्म हो बात जाएगा। जो है थोड़ी-सी ऑफ ट्रैक जाएगी। यू कीप इट, आप निकालो ऑफ ट्रैक, कोई मसला नहीं है, ये बात एंड की असल मैं भी करूंगा तो सारा टॉपिक मेरा भी वो सही उल्टा है। हो जाएगा, दैट्स अ मेरा प्रॉब्लम। गो यहाँ पे आप लोगों गो से अहेड। एक सवाल है कि हमने एक हाँ। बात तो एस्टेब्लिश कर ली है कि जो सिस्टम इंडिया में चल रहा है और जो इसराइल में चल रहा है काफ़ी सिमिलर सिस्टम है, ठीक है? हम्म, मतलब हम ये कह सकते हैं कि सेम ट्रैक पे एक ट्रेन पीछे चल रही है, एक ट्रेन आगे चल रही है, मतलब यहाँ तक सब एग्री करेंगे, सही? Hmm. yes। मेरा सवाल ये, उस दिन मेरी फर्स्ट ऑफ ऑल मेहदी से बात हो रही थी और मेहदी कह रहा था कि पाकिस्तान और इंडिया में दोनों तरफ से हेट है। मैं मेहदी को कह रहा था कि ये जो है, यहाँ पे मैं तुमसे बहस भी नहीं करूंगा क्योंकि पाकिस्तान में इंडिया के लिए हेट नॉन एग्जिस्टेंट है। इन नॉर्मल पीपल इट्स जस्ट नॉट इवन देयर, इट्स नॉट अ थिंग इन पाकिस्तान, हेट टुवर्ड्स इंडिया और इवन
thinking about India on a random day. It's just not a thing. We have no hate towards them. सही है साद I think you agree with me on this. Mm-hmm. And Mehdi, I do also agree. okay, Also okay, agree now. you change your point. पहले नहीं Okay, था ना, okay. So see, that's the kind of people we are. We are very open to changing our minds. सही है. yes. मेरा सवाल आप लोगों से ये है कि अगर जो है इंडिया की जो ट्रेन है वो इसराइल वाली पटरी पे चढ़ी हुई है, तो क्या ये पाकिस्तान में जो हमारी तरफ से एक एक्सट्रीम लीनियंसी वाला सीन है, क्या ये इस वक्त गलत है? क्या हमें एक थोड़ा ज़्यादा विजिलेंट स्टैंड उठाना चाहिए, कंसिडरिंग हाउ इसराइल इज़ प्रोग्रेसिंग एंड व्हाट इंडिया इज़ ट्राइंग टू डू विथ इट्स ओन पॉपुलेशन? इंडिया की पॉपुलेशन के बारे में मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि पिछले जो 2 डेकेड्स हैं बेसिकली उसमें उनकी पॉपुलेशन को ब्रेन वॉश किया गया है काफ़ी एक्सट्रीम लेवल पे, जो मुझे लगता है, और अब वो एक उस जगह पे पहुंच गए जहाँ जहाँ द नॉर्मल पर्सन हैज़ अ हाई चांस ऑफ बीइंग, इफ दे आर हिंदू, ऑफ बीइंग एन एक्सट्रीमिस्ट. तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये कहता हूँ कि एट वन पॉइंट इवन इफ यू आर बीइंग ब्रेन वॉश्ड, यू स्टॉप बीइंग अ विक्टिम एट अ सर्टेन पॉइंट, के कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पे आ ही जाती है इवन इफ यू हैव बीन ब्रेन वॉश्ड एज अ नेशन. तो क्या पाकिस्तान की मतलब जनरली मुसलमान जो हैं उस एरिया के, डू शुड दे बिकम मोर विजिलेंट, डू और लाइक should we be more worried than we are, or are we less worried than we should be? I think that's the right question. साथ पे अगर आप इजाज़त दें मैं आपसे पहले आंसर करना चाहता हूँ इसमें. देखिए, मैं एक बात कर रहा हूँ इसमें, एंड दिस जी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट नाउ. एंड दिस मैंने जी आपको लास्ट टाइम बताया था कि वी विल गिव सम सॉल्यूशंस. वी वोंट ओनली डिस्कस प्रॉब्लम्स हियर, वी विल गिव सम सॉल्यूशंस, एंड जी दोस सॉल्यूशंस माइट लुक लाइक वेरी रेडिकल वंस, एंड आई सही डोंट केयर अबाउट दैट फैमिली. देखो, बाज़ वक़्त बंदा कह देता है कि भाई कैंसर है, आपका हाथ काटना पड़ेगा, तो इट इज़ अ वेरी रेडिकल थिंग, बट कैंसर है, ठीक है. द प्रॉब्लम हियर इज़ मुस्लिम्स के अंदर जनरल मुस्लिम पॉपुलेशन को थोड़ा-सा टेम डाउन किया गया है. एक खास टाइम के बाद, एक खास अरसे के बाद मुसलमानों को टेम डाउन किया गया है, खास तौर पे 9/11 के बाद, ठीक है? सही मुसलमानों को बहुत ज़्यादा टेम डाउन किया गया, और इसमें खुद हम मुसलमान इन्वॉल्व हैं बहुत ज़्यादा. सही. आवरसेल्व्स, हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है. अब अगला हम्म, क्या है इसका, मैं आपको बताता हूँ. आई एम नॉट सपोर्टिंग एनी काइंड ऑफ टेररिज्म, of ठीक course. है? बट आई विल टेल यू, ईदर स्टेट और नॉन स्टेट, रेजिस्टेंस should be there in any form. Hamas is a resistance group. Hezbollah in Lebanon is a resistance group. बहुत सारे कंट्रीज में रेजिस्टेंस ग्रुप्स हैं. इन पाकिस्तान देयर वर रेजिस्टेंस ग्रुप्स जिनको डिसमेंटल किया गया. इंटरनेशनल आईएमएफ और दूसरे इन तमाम लोगों ने क्या किया, मुसलमानों को पैसे देने के लिए, वो करने के लिए कहा कि डू सम काइंड ऑफ नॉर्मलाइजेशन, आप इनके अगेंस्ट रहो. देखो, पॉलिटिक्स करनी है ना, दुनिया में रहना है ना हमने. बेशक. मुसलमान सीधी सी बात है, दिल के अच्छे हैं, पहले क्लियर है वो. बेशक. उनके जनरली उनके अंदर हेट है ही नहीं भाई. अब हम्म, आप फ़लस्तीनी बच्चों को जाकर सवाल पूछोगे ना कि भाई क्या मसला है इसराइल के साथ, तो वो सिरा ये कहते हैं, दे हैव टेकन अवर लैंड, वी वांट अवर लैंड, वी वांट टू गो बैक देयर. इट्स हम्म, सिंपल. या वो कहते हैं एटलीस्ट टू स्टेट सोल्यूशन करो. ठीक है, आप तो हमें मार रहे हो, मजलूमों वाला मातम कर रहे हैं लिटरली कि भाई हम हम्म, तो मर रहे हैं. दिस इज द रिएक्शन ऑफ मुस्लिम्स राइट नाउ इन द वर्ल्ड. It needs to be changed, and that's what happened in 7th October. Actually, Israelis were not expecting that. They were expecting somehow, क्योंकि उनको इंटेलिजेंस खबर थी इजिप्ट की तरफ से कि हमास would do some kind of thing, but Bibi हम्म, and his war cabinet was never expecting such a big, क्या कहते हैं, attack from the side of Hamas. और सर, सही. इसके अलावा कोई सोल्यूशन नहीं. तो रेजिस्टेंस ग्रुप्स बनाए जाएं, चाहे स्टेट की तरफ से चाहे नॉन स्टेट एक्टर्स हो, बनाओ और इनको सीधा. This is a very extreme kind of solution, but this देखो, is the only इट इज अ solution. प्रोसेस ना, ये इस तरह की बात नहीं है कि फॉर एग्जांपल पहले ये जो ग्रुप्स वाली बात है ना, इस पे तो मेरा हमेशा से यही बिलीफ है ना कि भाई आप लोग, you are Muslim majority countries all around the Middle East. So you don't need groups. You are groups. You are, your militaries are these groups, what you are asking for basically. Why does Egypt or Lebanon or Jordan would need to create a group of resistance when they are an army of resistance, when they should be an मैं army बताता of हूँ क्यों. मैं resistance? इसमें थोड़ा शॉर्ट आंसर करूँ. हम्म, बिकॉज दे हैव ऑल बीन सोल्ड टू Not आईएमएफ all एंड टू of अमेरिका. it. That is लाइक exactly, of 90% ऑफ course. देम हैव बीन सोल्ड. अब Not them, अगर देखो not देखो. them. It is not them. It is everyone. It's ये included Pakistan, included everyone. This is यस यस everyone. This is यस गुड. everyone. That is what I'm saying basically. What you are saying, being sold. That is why these armies are always talking to people about, oh, see, this is why as a result we are even thinking of a group
that these countries should make resistance groups. We are not even saying like what the fuck are these countries doing with their armies and who are these armies for. Hmm. You know, what are they going to defend? So but okay, of course it is a very it's not something that can be done right away straight up that like okay, military should be involved. First of all, things that are easier to do are actually, first of all, start vocalizing the boycott that you are actually going to do. Start vocalizing it. If all the Middle East, all these countries with oil and gas and sea routes, you know, all these countries like Yemen, for example, which Yes. is unfortunately not even a country anymore because Saudis have destroyed it to that point. Yes. And Yes. that also very tactfully so, according to America's ideas and the Exactly. Westworld's ideas, Yemen Exactly. has been Exactly. tactfully destroyed by Exactly. Saudis Yes. because they control a very, very important sea route. So if all these countries were actually serious about anything, first step Mhm. would be that you would everywhere on the internet, you would be seeing vocalization of the issue by the leaders of these countries, that they are not talking about anything else but this, that by the end of every statement they say that whatever is happening internally in our country, but all sides of our country, the government and the opposition and the people and the military, whoever is fighting against each other, will stand up and say no to Israel. And whatever Israel is doing, we will not accept it. If Israel continues this, there will be boycott, total boycott of everything that is connected to Israel in any possible way. You send this message not to Israel, you send this message to the West world. You tell them we are not going to stand by this. Be it Turkey, you know, these people are. Oh, they go to the fucking UN and they walk out when the Israeli speaker is speaking and they walk out as a protest. What kind of a protest is this? You are selling them oils, you have trade deals with these people, and then you are telling me, a common man, and we are believing you to be the leaders of the resistance of this whole thing, that oh, they walked out and we are clapping like wow, what a good job, like, you know, be like Turkish, they are walking out. What do you mean walking out? Why are you trading with them? Why are you dealing with them? Okay, this, what is this going to do? First of all, it will realize the issue's depth, how serious this is, because I have realized one thing the other night. It is not understand it's not understood by people how deep this issue actually is, how big and scary all these people, all these warmongers and hate spewers who are talking about like, oh, you should kill these people before they get old and become terrorists, and you should kill them when they are young. Yeah, all these people who are saying this kind of shit, they don't realize this will come to your own doorstep one day. Americans who sit Yes. in Yes. America worlds apart from the normal world, and they think they are safe. They don't understand that this is not going to stop there. Not I'm saying that oh, some war is going to happen because Muslims will get back their honor and start fighting. No, you are creating a unpeaceful world and you are legitimizing cruelty in the world. It will spread like wildfire, and you will also see these people in America, for example, are the same kind of people who say that okay, just because Japan attacked them during a war, in the times of war, Japan attacked their Pearl Harbor, so it was justified for America to use nuclear bombs on civilians in Japan, Hiroshima and Nagasaki. These same Mhm. people, these are the same people who say it is wrong for Hamas to exist. People of Palestine are all terrorists, be they Hamas or not, because they support Hamas. They are terrorists and they have no right to do that. Why are they doing that? Because they don't accept that a Palestinian has the right for self defense. Like America had the right to self defense. For them, when it happened to them, they went ahead and destroyed the country with nuclear bombs. But when it comes to Palestine, there is no such argument, you know. It's And like it's not surprising that Hamas exists. It's surprising that not each and every Palestinian is part of the organization. That's the surprising thing. yes, Like, for me, what is heartbreaking actually is just one simple thing. You know, we live in a world where every day I look at these posts everywhere around the world. This Aurat March in Pakistan, this feminist right, this trans rights in Europe, da 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 da. Veganism, don't kill cows. Everyone is crying over these things, gluing your hands to fucking paintings and throwing oil and doing this and doing that. Okay, okay. This is exactly why I was against all this, because I never trusted any of these people who are calling themselves activists. Right now in the world, everyone can see everyone can see that people are being killed.
and what they comment and what they believe about that is like, these people deserve to be killed like this, these people deserve to be starved, despite anything. They do not want to hear any reasoning. All they have to say is like, Israel has a right to self defense. I say, okay, but against who? Who is fighting you when you are the oppressor? When you are going into Again, someone's territory, how are you defending yourself? I would like हैदर to की bring स्पीशी वाली बात the याद आती है फिर मुझे। yeah, this मारो is my एनिमल्स को, सबको yeah, मारो, my किल only ऑल द the एनिमल्स बट only सेव ह्यूमन loyalty बीइंग्स of फर्स्ट। us should be to the preservation of our species, but regardless of that, वो बात वापस वहाँ आती है जहाँ मैं बिल्कुल स्टार्टिंग में बात कर रहा था कि does the more powerful of the two in any kind of a relationship bear most of the responsibility and what ये तो no इंटरनेशनल no लॉ के अकॉर्डिंग यही बात है ना। या हम लोगों ने मतलब ये तो बात कर ली कि यस वी ऑल डू एग्री ऑन इट, लेकिन क्या मतलब, क्योंकि मुझे नहीं समझ आ रहा कि हाउ डू आई पुट दिस इन अ सेंटेंस, तो मतलब आप दोनों में से कोई अगर कि how would you justify it in a simple way कि this is the reason I believe that the more powerful is the one that bears the more responsibility, doesn't matter कि मतलब जैसे कि कोई एक रिलेशनशिप ले लो, मैं बड़ा भाई हूँ, मेरा छोटा भाई है, हमारे बीच कुछ भी हो रहा है, because I'm the one with the stronger mind and everything in that situation, all the responsibility bears on me. लेकिन जाहिर है this doesn't directly translate, so how would you translate it, मतलब कि how can you put it in something that is digestible? Is there a way to make this thing digestible, like make it easy to understand the concept or the working of the concept? Why is it so? यार वो कहते हैं ना कि मोर क्या कहते हैं, मोर पावर कम्स विद मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी ना, इट्स सिंपल सी Hmm. बात है बड़ी। ये तो इसमें No, but but क्या है वो but I'm talking कि अगर तो दो नेशंस हों और उनमें से एक नेशन जो है, लेट्स आई हैव अ गुड एग्जांपल, लेट्स टेक अमेरिका एंड नॉर्थ कोरिया। या नॉर्थ कोरिया एक बदतमीज बच्चे की तरह है, ठीक है, और अमेरिका है उसका बाप, सही है। तो अब इस सिचुएशन में आपको ये बैलेंस आराम से नजर आएगा कि अमेरिका इज द वन विद ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटी, नॉर्थ कोरिया हैज नो रिस्पॉन्सिबिलिटी बिकॉज दे आर नॉट comparable. So America does take the responsibility in this case and make sure कि जो नॉर्थ कोरिया जो बदतमीज बच्चा है वो ऐसी कोई बदतमीजी ना करे जिससे किसी का नुकसान हो, in this simplified example. नहीं, So मैं इसमें एक how बात बता, आई अंडरस्टैंड योर पॉइंट। hmm, देखो हैदर भाई, द प्रॉब्लम इज, पहली बात तो देयर इज नो कंपैरिजन बिटवीन टू कंट्रीज हियर, इफ यू थिंक अबाउट of इसराइल एंड course, पैलेस्टाइन, यहाँ पर दो कंट्रीज हैं ही नहीं, ठीक है ना। नहीं नहीं वन, वो सब बात ही नहीं है मेहदी भाई। हाँ हाँ, जी, आप करें कंटिन्यू। एक कंट्री है, इज़राइल इज़ अ कंट्री, ठीक है, जिसको हम्म, पूरे वेस्ट ने सपोर्ट किया हुआ है, इज़ लाइक द इलेजिटिमेट चाइल्ड ऑफ क्या कहते हैं यूनाइटेड स्टेट्स इन यूनाइटेड मिडल ईस्ट, स्टेट्स। ठीक है ना, इन द मिडल ईस्ट। सो दे हैव बीन सपोर्टिंग हिम, सबका लाडला बच्चा इज़राइल, न्यूक्लियर बम बम तक बना लिया, कुछ नहीं कहा, सब कुछ। एंड द अदर ग्रुप इज़ बीइंग क्या कहते हैं यार, डिप्राइव्ड ऑफ इवन द बेसिक ह्यूमन राइट्स। सो हम्म, दिस देयर आर दीस टू ग्रुप्स। सो यहाँ पर ठीक है, नॉर्मली अगर एक ज़्यादा पावरफुल है, कम पावरफुल है, जो गलत कर रहा है वो गलत कर रहा है, चाहे वो कम पावरफुल है, ज़्यादा पावरफुल है, इट्स नहीं नहीं, अब बात ये नहीं है कि गलत के हु इज इविल एंड हु इज नॉट। फॉर एग्जांपल मेरा पर्सनली ये मानना है कि अगर एक केस है जहाँ एक स्ट्रॉन्ग नेशन है और एक वीक नेशन है, लेट्स से, ठीक है, मैं इसमें ये नहीं कह रहा कि फ़लस्तीन जो है वो इविल नेशन है, लेकिन मैं एक टोटली सेपरेट एग्जांपल दे रहा हूँ कि आप बिलीव करें एक स्ट्रॉन्ग नेशन है और एक वीक नेशन है, ठीक है, और जो वीक नेशन है वो मस्ती करता है, और अब सीन ये है कि जो बड़े नेशन के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी तब भी जो है, जो एक स्ट्रॉन्ग नेशन है जो कि 10 टाइम्स 100 टाइम्स स्ट्रॉन्गर है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तब भी उस पर है कि मिनिमम ब्लड शेड हो, इवन दो छोटा नहीं, वाला अगर मोरल, बदतमीजी नो करे। डाउट मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो अब क्योंकि अब यही दुनिया में नहीं मसला, नहीं 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 नहीं, ये सिर्फ मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। अब मैं बताता हूँ इसमें के असल अच्छा एक डिफरेंशिएशन क्या है, किस मिनट, जगह पे। मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसके अलावा और कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों नहीं है, मैं बताता हूँ, वो मैं इसलिए रुको नहीं रुको, है, नहीं नहीं, मैं मैं बता इसलिए, देता हूँ, मैं ये तुम्हारी हाँ, बात खत्म हो जाएगी। इसमें ये है हाँ, कि ये जो मैंसप्लेन्ड। हैदर बात कर रहा है ना, इस बार हम्म, ये वाली जो बात, ये मैं क्यों बार बार कह रहा हूँ कि भाई हाँ, जिसके पास पावर ज्यादा है, जिस नेशन के पास, इट बेयर्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम्म, दो टाइम्स हैं, देयर इज अ टाइम ऑफ पीस, देयर इज हम्म, अ टाइम ऑफ वॉर। हम्म, दो मुल्क जंग पे जाते हैं, हम्म, अब जंग किस तरह लड़ी जाएगी, दिस इज ऑलरेडी एक्सेप्टेड बाय नेशंस ऑफ द वर्ल्ड अंडर यूएन चार्टर्स, एवरीवन इज अ सिग्नेटरी टू दिस, दैट इन केस ऑफ वॉर अगर आप लड़ रहे हो तो विच फ्रंट आर यू फाइटिंग ऑन, ओनली द वॉर शुड स्टे लिमिटेड टू दैट। वॉर की टाइप्स हैं, ठीक है। जिस हम्म, तरह एक बड़ी आप कॉमन बात सुनते होगे, फॉर एग्जांपल एक
चीज होती है कोल्ड वॉर, जो अमेरिका और रशिया की बहुत अरसा चली, यूएसएसआर और यूएसए की कोल्ड वॉर चली. इट वाज आल्सो अ वॉर, बट इट वाज अ टाइप ऑफ वॉर लिमिटेड टू अ certain extent, that there is no direct confrontation between the military aspects of the two. Just हुँ, you are fighting a war on different fronts. This is a diplomatic war, this is an economic war, it's हुँ, cold war. फिर एक होती है हॉट वॉर के, जब व्हेन यू आर अप फ्रंट फेस टू फेस विद ईच अदर्स मिलिट्रीज एंड यू आर फाइटिंग. तो हुँ, जब एक टाइम ऑफ वॉर होता है हॉट वॉर का, कि जब आप लड़ हुँ, रहे हो एक दूसरे से, अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल लॉज यू हैव टू एडहेयर टू सर्टेन वैल्यूज, जिसमें प्रिजनर्स ऑफ वॉर के साथ किस तरह का सलूक किया जाएगा वो होगा, आपका रेजिस्टेंस किस लेवल का होना चाहिए, आप अटैकिंग हो या आप डिफेंसिव हो, ये चीज में आपका रोल क्या होगा, ये चीजें ऑलरेडी डिजाइन बाय डिजाइन साइंड होती हैं. ठीक है. हुँ, तो इसमें फॉर एग्जांपल जो बात है कि जी, पहली बात ये नहीं है कि हु इज मोर पावरफुल एंड हु इज वीकर व्हेन इट कम्स टू टू डिफरेंट established states with a military and all of the same level पर, दोनों की एक एस्टेब्लिशमेंट, एक स्ट्रक्चर है गवर्नमेंट का दोनों का. हुँ, उसमें बात आ जाती है, उनको लॉज फॉलो करने होते हैं कि जी आपने किन फ्रंट पे जंग लड़नी है. सही है. सही। सो फॉर एग्जांपल इंडिया और पाकिस्तान बहुत जंगें लड़ चुके हैं आपस में, लेकिन आपने कभी ये नहीं देखा कि पाकिस्तान ने मुंह उठा के दिल्ली पे बम मार दिए या मुंबई पे बम मार दिए, हुँ, या इंडिया उठा, इंडिया ने जाके पिंडी में बम मार दिए. हुँ, जहां पे जंग हुई है वॉर फ्रंट्स डिसाइडेड हुँ, थे और वॉर फ्रंट्स पर जंग हुई है. सही है. हाँ, सही। इनडिस्क्रिमिनेट नहीं होता कभी भी जंग में, रूल्स ठीक होते हैं है, उसके. ये ऑलरेडी होता है. अगर फॉर एग्जांपल पाकिस्तान उठ के मुंबई पर मार देता, किसी मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट के अलावा किसी सिविलियन अस्पताल पे मार देता बम जाके, हुँ, और ये क्लेम करता कि भाई इंडिया की मिलिट्री छुपी हुई थी अस्पताल में, हमने इस वजह से सिविलियन अस्पताल पे बम मारा, तो ग्लोबल कम्युनिटी जो है, इंटरनेशनल कम्युनिटी पाकिस्तान का बॉयकॉट कर देती, पाकिस्तान पे सैंक्शंस लग जाती, पाकिस्तान हुँ, के अगेंस्ट पाकिस्तान के गवर्नमेंट के ऊपर वो आ जाता, प्रेशर आ जाता कि हुँ, अपनी मिलिट्री को रोको वरना तुम्हें चेंज किया जाएगा, ये जो है रोग नेशन बन रहे हो तुम क्योंकि तुमने उधर मारा है, डिस्पाइट वट एवर योर रीजन वर. अगर तुम कह रहे थे कि इंडियन आर्मी छुपी हुई थी अस्पतालों में, ऑब्वियसली उनका मुल्क है, लेट से इंडियन आर्मी अगर एक अस्पताल को या स्कूल को बेस के तौर पे यूज कर रही थी एक शहर हुँ, दिल्ली के अंदर, वुड नॉट लेजिटिमाइज अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल लॉ, इट इज नॉट अलाउड फॉर पाकिस्तान टू हिट दैट. ठीक है. सही। सिर्फ मिलिट्री बेसिस जहां पर आपके डिसाइडेड वॉर फ्रंट्स हैं, एक इंटरनेशनल कम्युनिटी की आइज होती है व्हेनेवर देयर इज अ वॉर. सही है. तो सही। उधर ही लिमिटेड रहती है, हुएवर एक ब्रेक सवाल है साथ दोस में लॉज. भी. हम्म. मैं जब अभी आपको 1 मिनट के पहले कह रहा था कि मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके अलावा कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दुनिया की सिचुएशन में राइट नाउ कोई नहीं है, वो मैं क्यों कह रहा था. हम्म. उसका रीज़न ये है कि हैदर भाई गौर से सुनाइए मेरी बात प्लीज़. जी। वो मैं इसलिए कह रहा था कि अब मिसाल के तौर पर 2 मिनट के लिए प्रूव हो जाता है जी. आईसीजे के अंदर कल एक बंदा केस लेके जाता है कि इजराइल एज अ स्टेट हैज़ डन व्हाट, हुँ, वॉर क्राइम्स. सही। प्रूफ हो जाता है, जो कि बड़ा हुँ, ईज़ी है क्योंकि वीडियो एविडेंस सब कुछ. पहली बात तो इसमें लगेंगे साल 2 साल, मतलब इतना फाइट करेंगे वो केस. ठीक है, एनीवे प्रूव हो गया आखिर में कि भाई हुँ, इजराइल ने वॉर क्राइम किया है. साथ भाई, अब इजराइल के ऊपर क्या-क्या चीज़ें होंगी. आईसीजे लिखेगा सिक्योरिटी काउंसिल को, दूसरे इदारों को कि भाई इसने ये किया है, ये किया है, हाँ देखो. ठीक है, लॉ सिक्योरिटी काउंसिल एनफोर्समेंट में रुको, नहीं रुको, रुको, एक्सेस रुको, लिसन, करती. लिसन, 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 लिसन. सिक्योरिटी काउंसिल में हम जाएँगे, जाने के बाद कहेंगे भाई अभी हमने इसराइल के खिलाफ ये करना है मिसाल के तौर पर. कोई इम्पोज़ करने हैं, सैंक्शंस इम्पोज़ करते हैं, डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है सोशल, कहाँ से होता है? सिक्योरिटी काउंसिल से होता है, उसके अलावा नहीं होता है. जो हुँ, सैंक्शंस की इम्पोजिशन होती है वो सिक्योरिटी काउंसिल की तरफ से होती है. हद तक अगर कोई फौज भी भेजना हुआ, किसी बंदे को गिरफ्तार भी करना, जो भी करना हुआ वो सिक्योरिटी काउंसिल की तरफ से होती है. भाईजान, सिक्योरिटी काउंसिल में जाएंगे, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका क्या कर देगा? सही। वीटो कर देगा. इस दुनिया के अंदर लॉज ऐसे बनाए गए हुए हैं जहां पर जो पावर हैं, पावरफुल हैं, वो जो चाहे करें, उनको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है. नहीं, वो वाली बात तो ऑलरेडी, वो एक अलग बात है ना कि लॉज फॉलो होते हैं कि नहीं होते, वो एक दूसरी बात है. वो तो लेकिन वो बात जो करने आपने की ये बात है की, जो क्योंकि आपने बात की इसराइल वॉर फ्रंट के आगे. इसराइल इधर क्योंकि एक पावर है जो कि अब ये एक सिचुएशन ऐसी है कि जहां पे फलस्तीन इज नॉट अ स्टेट लाइक इसराइल. फलस्तीन गवर्नमेंट स्ट्रक्चर इज नॉट एज दैट. उसके पास डिफेंस राइट्स नहीं है इस फलस्तीन के पास. फलस्तीन के पास डिफेंस फोर्सेस नहीं है फलस्तीन के पास. तो अब इधर जो है सिचुएशन वो एक नॉर्मल सिचुएशन से अलग है, और इसलिए क्या है कि स्टेट विद इन अ स्टेट है फलस्तीन, अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल कम्युनिटी जो कि इसको नहीं मान रहे, जो कि इसराइल के सपोर्टर है. अब हुँ, इसराइल बेयर्स मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर व्हाट विल बी द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ दिस नहीं नहीं नहीं, दिस क्या कहते हैं उसको, वो चढ़ाव जो होता है जो, अपार्थाइड, नहीं 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 नहीं, जो एक एग्रेशन, एग्रेशन. एग्रेशन। अग्रेशन. हाँ, इस अग्रेशन की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि सिंगल हैंडेडली, वन हैंडेडली, सिंगल हैंड, अब क्योंकि
अकॉर्डिंग टू द लॉ बेसिकली जो बात है, लीगल टर्मिनोलॉजीज, जो लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी इसराइल की है कि भाई आपके ऊपर हमला हुआ, आपने जवाबी कार्रवाई की, जो बंदे उनके मारे गए, जो बंदे आपके मारे गए। अब लेट से वो हॉस्टेजेस बना के इनके मुताबिक ले गए इनके बंदों को, इन्होंने भी प्रिजनर्स रखे हुए थे, उनको ये पता नहीं क्यों नहीं दुनिया हॉस्टेजेस मानती, जबकि एक बंदा चुका गया है तो वो भी हॉस्टेज है या प्रिजनर है, एक ही बात है। वो हमास वाले लेट से उनको प्रिजनर्स कहते होंगे, ये जिनको प्रिजनर्स कहते हैं वो उनको प्रिजनर। अब प्रिजनर्स ऑफ वॉर के लिए एक अलग माहौल है, उसमें बिल्कुल हरगिज भी ये अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल लॉ इट नेवर सेज के यू स्टार्ट बॉम्बिंग cities in a country just to force them to come down to their knees और वो आपको आपके बंदे वापस करें। It does not work like that anymore. हुँ, But despite all of that, जो बात है कि अब अगर इसराइल क्यों है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसराइल के ऊपर ज्यादा क्यों आती है, वो इस वजह से आती है क्योंकि इसराइल एक एक्सेप्टेड नेशन इन द वर्ल्ड है, जो कि पार्ट ऑफ सर्टेन सेट ऑफ लॉज है, इस वजह से उसके ऊपर रिस्पॉन्स। अगर ये स्टोन एज या अभी कुछ 2000 ये कोई 400 साल पहले की जंग होती या 200 साल पहले जंग हो रही होती, उधर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती किसी के पास। उधर बेशक आप जितने ताकतवर हो सबको मार दिया जाके तो मार दिया, उधर कोई ऐसे आप सिग्नेटरी नहीं थे किसी चीज के, नो वन कैन कंडेम यू। अब आपका जो एग्जिस्टेंस है वो सोलली इसलिए एग्जिस्ट कर रहे हो आप क्योंकि चंद मुमालिक दुनिया के बैठे टेबल पर उन्होंने डिप्लोमेटिकली तय किया कि यार ठीक है इसराइल स्टेट बन गई है, इनको फरा हमारी तरह आम जो दुनिया के इंटरनेशनल लॉज हैं इनको फॉलो करने होंगे ताकि ये अपने इस एग्जिस्टेंस को कायम और बरकरार रखे। तो इस वजह से उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि जब आपने एक राइट ले लिया फलस्तीन के लोगों से टू डिफेंड देमसेल्व्स, आपने उनकी मिलिट्री स्टेटस वगैरह सारे छीन लिए उन लोगों से, दे डू नॉट हैव अ यस। ऑर्गेनाइज्ड आर्मी। तो अब उधर क्या मसला है कि दे आर अनप्रोफेशनल अनट्रेन्ड पीपल हु आर इन अ रेजिस्टेंस ग्रुप। You are a सही। professionally trained group who has to follow international law. If you do not, you should be sanctioned, you should be boycotted by the international community. This is not said by me. इस वजह हुँ, से moral responsibility की बात नहीं है, ये legal responsibility बनती है। It's not about who is more powerful right now. अभी क्या है, state within a state है, it is a very different story than than two countries going to war, क्योंकि वहां पे दो स्टैब्लिश प्रोफेशनल मिलिट्रीज होती हैं जो लड़ रही होती हैं। यू कैन हुँ, आइडेंटिफाई अ पर्सन इन अ यूनिफॉर्म कि ये ही इज अप अगेंस्ट मी, यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म। उनके सेट ऑफ लॉज होते हैं, देयर आर कोड्स ऑफ कंडक्ट फॉर ऑल मिलिट्रीज। फॉर एग्जांपल हमने पाकिस्तान वालों ने इंडिया का जहाज गिराया, उनका बंदा हमने उठाया, अब हम उसको, हमारा दुश्मन है हम पे बम मारने आ रहा है बेंचोद, उसको क्या है जी, एक तरीकेकार अब है उसकी गालियाँ रिस्पेक्ट। कढ़नी। हाँ उसकी रिस्पेक्ट देखो, उसको जो है इवन मिलिट्रीज का रोल ऑफ कंडक्ट ये होता है कि जो उसका ओहदा है बंदे का ना, जो मतलब फॉर एग्जांपल अगर फ्लाइट क्या था वो, फ्लाइट लेफ्टिनेंट या क्या, फ्लाइट फ्लाइट अभिनंदन। अभिनंदन। अभिनंदन, फ्लाइट इस तरह ही कुछ था ख़ैर। पायलट था वो। एनीवेज़ नहीं क्या उसका रैंक क्या था, अब जो रैंक होता है ना, अब उसको जो ट्रीट किया जाएगा या उसको क्वेश्चन किया जाएगा, या तो उसके सेम लेवल का बंदा होगा जो उसके सेम रैंक पे आता है मिलिट्री में, या उसके सीनियर रैंक पे आता है इवन हुँ, पाकिस्तानी मिलिट्री में। ये पाकिस्तान आर्मी का कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है कि वो एक लेट से एक सेकंड लेफ्टिनेंट को उस पे बिठा दे, एक बड़े सीनियर लेवल दूसरी मिलिट्री के प्रिजनर जो है वो उसको बिठा दे उस पे कि भाई ये करना है। तो अब इसमें ये है कि पहला मसला मुझे व्हाट इज हार्ट ब्रेकिंग इज दैट कि द वर्ल्ड इज वर्किंग अगेंस्ट इट्स ओन लॉज, द वेस्टर्न वर्ल्ड स्पेशली, ये इट इज गोइंग अगेंस्ट इट्स ओन वैल्यूज व्हेन इट्स, ये हिपोक्रेसी है वेस्ट की, ये डबल स्टैंडर्ड्स हैं वेस्ट के, आम बंदे से लेके इनकी गवर्नमेंट्स तक आर वर्किंग अगेंस्ट देयर ओन वैल्यूज। मेरी एक ही अपील है कि मैं आई डू नॉट केयर अबाउट गवर्नमेंट्स, मेरी एक ही अपील भी क्या है, मैं एक ही चीज देखना चाहता हूं एज अ सोल्यूशन जुस्तजू। दैट यस। लोग जो हैं, सोल्यूशन इज इंपॉर्टेंट। नाजरीन गौर से सुनिए, just जी साहब बोल रहे stand, हैं। just everyone, no matter how much you hate Muslims, no matter how much you hate Palestinians, no matter how much you love Israel, no matter what are your whatever, all I want is people to stand by their own values and by their own beliefs and by their own ideas of humanity, liberalism, secularism, and whatever their political beliefs are. Just stand by your own values. Do not do this double standards. Do not apply these double standards to the situation, because this is your own international law. This I don't care about it because I don't matter right now. You know हुँ, what am I saying? Is it is what matters. So, for example, I would just end it with this. Something that I just saw. It's like Ben Gvir, इनका मिनिस्टर है हुँ, एयरपोर्ट। ओके। गवर्नमेंट का,
बेन गवीर नाम है इसका, Okay. इसराइली मिनिस्टर का। अभी सही। हुआ ये Okay. इन इसराइल, वो उसने a kid was firing a firework for Ramadan celebrations in Palestine, and a police officer, he just shot the 12-year-old kid dead. ओह, अस्तगफिरुल्लाह। So this Ben Gvir guy, he was justifying, he's a minister. So he's a minister in Israel, and he is saying that I am proud of this police officer who killed this 12-year-old. And people are like, but this was a 12 years old child. He's like, no, this was a 12-year-old terrorist. And the world watches and the world listens to these words from people sitting in the government, and no one condemns. And it is just shame on you. You know, whoever supports this is shame on you. I am very proud that I am a very humane human, that no matter what kind of color, race, caste, creed, culture, I would never believe that I would ever sit and justify someone saying that this was a 12-year-old terrorist. Okay. So now I will present my अस्तगफिरुल्लाह। last comments, Heather bhai. जी मेरे So भाई। my comment is, if you are not doing what Mr. Inklabi just said, if you are not doing, if you are not thinking what he said right now, then you are the nation of Hitler. You believe in his ideology. According to you, what he did by killing few million Jews was very right. So you have no more grounds to stand up and to tell the world that Holocaust was wrong. You are wrong. Then we will perceive this thing from your side that Holocaust was also right, and what Mr. क्या नाम है उसका Hitler did इनकलाब। was a हाँ। very right thing. He Still left few. He should not have left them as well. He should have killed them all, because this is indiscriminate, right? Maro sabko, is kill kids, indiscriminate. kill women, kill old people, kill all, no difference, kill everybody. It's just a concentration camp. They were saying that, okay, what Hitler did was he made small concentration camps, right, in different places. They made one But big what they are one. doing in Gaza is they have made Gaza, One it's big usually one. called, Gaza is called open air jail, right? Open Prison, air yeah. jail. So what you are doing is you have made a bigger scale jail, and you have made only one concentration camp, and you are killing millions of you are first of killing to second में आ जाता है. पहले you are depriving all of them from basic human rights, and secondly then you are killing them indiscriminately, and that's what you Anyone are. That's your who hypocritical sense of freedom. That's your hypocritical ideas of liberty and freedom and equality and whatever you are talking about. That's anyone what who we are trying doesn't to show you. resent the suffering of children has no place in any kind of authority or decision making. I mean, that's just Yeah, disgusting. yeah, यही तो hypocritical है ना, यही I तो mean, खत्म है. that's why it's very important to actually have children, and because s- your life should all be about children. Our lives, everything should be about children. Like it should Yes, be dedicated to children, every single individual's life. And that's why I'm so against this, like I want to enjoy my life. Fuck that shit. That is the ideology that creates fucking monsters like this, who can yes, to the whole world without shame say that the suffering of a kid is justified. It's absurd, and it's the fact that we need to sit here and say it's disgusting is I don't even know, man. It's yeah, yeah. We have no words. Because what is just heartbreaking for me is, you know, what's more heartbreaking for me than actually people being killed is the reaction that the world is giving on people being killed. Yes. सितम की रस्में बहुत थी लेकिन न थी तेरी न थी अंजुमन से तेरी पहले। अंजुमन से पहले. वाह वाह. सितम की रस्में क्या बहुत थी लेकिन न बहुत थी तेरी थी न थी अंजुमन से तेरी पहले। um, सजा खताए नजर से खताए पहले, नजर से पहले, ताब जुर्म आदाब में जुर्म सुगन में से सुखन से. पहले। वाह वाह वाह, क्या कहने साथ भाई, क्या ये कहने जियो this is जियो साथ. out there. जियो जियो। क्या कहने, क्या वैसे कहने. मुझे बॉय ये शेर में भूल गया था, एंड ये शेर में भूल गया था, आपने याद एंड दिलाया. करते करते सितम की अपने रस्में बहुत थी थी लेकिन न थी लेकिन तेरी न थी अंजुमन से तेरी पहले. अंजुमन से अपने पहले। व्यूअर्स को अजाब, सजा खताए, सजा सजा खताए नजर से पहले, नजर से सजा पहले, खताए नजर से पहले, से पहले, अताब जुर्म सुखन अताब से. जुर्म सुखन से पहले। सुखन से. वाह। एंड क्या करते करते आज ऑडियंस को बता दें कि हमने अपना इंस्टाग्राम और टिकटॉक पेज जो है ऑफिशियली बन चुका है, एंड यू जी. कैन फॉलो अस देयर, टॉक विद अस। I'll put a link.
इन द कमेंट सेक्शन इन द कमेंट्स। तो वैसे हमने आप आज लोग एक उसको वो करना था रिव्यू, लेकिन नाउ वी आर ऑल टू सैड टू डू व्हाट वी हैड टू प्लान टू डू इन द एंड ऑफ द broadcast today, because I don't feel like joking about anything right now. तो या या कल इंशाल्लाह जो है हम आपको अपना इंस्टाग्राम भी दिखाएंगे, और अगर इंशाल्लाह मेहदी भाई ने, और मेहदी भाई एक और ज़रूरी बात है, वी हैव टू मेक एक्स। It's the most I important. It's oh our yes safeguard. It's our yes yes safeguard, because Instagram, YouTube, they are our enemies, bro. They will block us the first don't say offense that, bro. we make. YouTube is just going to take us No, down. they Don't say they that. they wait for the world to notice. Until the world doesn't say that you're bad, they don't actually care. Yeah, yeah. True, So true, true. We need to but go to X. That is true. That is true. Anyway, नाज़रीन व हाज़रीन, आज की इन चंद ख़यालात के साथ आखिर में साद भाई के एक शेर के साथ कि साद इधर भाई ने क्या तकाज़े हैं शेर सुना। मसलहत के, आए उधर तकाज़ाए हाय, दर्द दिल है, ज़बां संभालें कि दिल संभालें, असीर ज़िक्र वतन से पहले। आए हाय हाय हाय। आहा! असीर ज़िक्र वतन से वतन पहले से ज़बां पहले। संभाए दिल। आहाहाहा! नाज़रीन व हाज़रीन, इसी अस्सलामु शेर के अलैकुम। साथ कि सज़ा ख़ताए नज़र से पहले और पहले, अताब जुर्म सुख़न से जुर्म पहले अपने सुखन से होस्ट मिस्टर पहले। मैग्नानिमस को और सूफ़ी जूनियर को और इनकलाबी साद को इजाज़त दी, साद इनकलाबी को, कासिम इनकलाबी को इजाज़त कासिम भाई दीजिए जानी, आप। आज हमारे नेम्स क्यों नहीं आ रहे मेहदी भाई? आपने नेम्स हटा दिए हमारे। नहीं, मैंने नहीं हटाया नाज़रीन व हाज़रीन।